Good evening, pirates. We'll be starting in next 3 minutes. Good evening, sir. Good evening, madam. My screen is visible Yes, sir. and voice is clear. Yes. ठीक है. कुछ noise आ आपने रहा है? सर स्क्रीनर में कुछ चेंजेस किए हैं? Yes. हाँ, कुछ तो दिख रहा है। Mhm. अभी वो ट्रम्प की तरह दिख रहा है। ट्रम की तरह मतलब? अभी वो ट्रम्प की तरह दिख रहा है। हेलो हेलो। हाँ, वही नहीं समझा मैं. ट्रम की तरह मतलब कैसे दिख रहा अभी वो इंडिसाइसिव मोड में दिख रहा है, डांसिंग मोड में। है? ओके, ठीक है. So let's start with today's agenda. So first topic is about understanding the structure. Second topic is about the updates about the Pearl Mine choppy trades. तो उसमें भी मैंने कुछ किया है, वो मैं शेयर करूंगा. Pearl Mine 4.0 and there will be next line of action, and after that we will be taking care of queries if there are any. Okay. So and जैसे मैंने बोला in today's session I would like to request this structure वाला video and Pearl Mine 4 topic without any interruptions, because I need to share this with a lot of other participants. तो I would like to request you guys, जो भी queries है chat में डाल देना. I'll address those queries post these two topics and next line of action के पहले वो decide discuss करेंगे हम लोग queries and all. So श्योर let's, श्योर, थैंक यू। हाँ, okay. So let's start with Nifty and Bank Nifty analysis. So आज हम शुरुआत we will start with Bank Nifty first and then we'll try to align or try to check what is happening in Nifty. Why like this? Because Bank Nifty has clear structure and for Nifty there might be similar move but no concrete structure. So let's start with the zoomed in chart. Zoomed in matlab we will take a top view of this first. So we'll go to weekly time frame. Market कैसे मस्के की तरह it has ran and
make an higher high around 61,000 something. And if you are part of two lines theory, okay, third topic ये भी था that I am planning to start a new session. Black Pearl 16 would be there, and for in Black Pearl 16, those who are eager to learn logic behind two lines, उनके लिए वो opportunity है. So this would be a theory session, including some practical understanding about executing trades. But 80% of the time will be consumed in explaining you the background of two lines theory. So those who are interested, you will receive an invite. If you are interested, be part of that group. Okay. So imagine Bank Nifty. So some participants are still new in this session. So I'll start analysis from the beginning to the current year. It is like from 2000 to 2026. Okay. So from this point to this point, this is an index, Nifty and Bank Nifty. So these indices are meant in such a way that they will never go below RSI 49 if it is configured in a right manner. RSI 49 के नीचे ये इंडेक्स जिंदगी में कभी नहीं जाएगा, ऐसे बनाया हुआ है. इसका मतलब क्या है? If you are investing in index will never act like an stock, and your investment should be always safe. That is how it is. The formula which runs index is designed in such a way that it should not go below 49. Why 49? What is the logic behind that? Uh, there is everything. I have also covered this in the past, but we are not going to discuss this today. I'll just explain why index is built like that, and what is the motive behind understanding index. If you know index and the moves which are happening in index, then definitely you can catch a good investment opportunities as well as trading opportunities in coming market. Okay. So see, when we are configuring RSI, normally the standard RSI configurations are like RSI 14. This 14 is very long story. When there was an US, there was an train. Okay, rice trading was happening, and the train was running or coming after every 14 days, like 2 weeks, and the rates were getting updated. And then when market digitized or dematerialized, so when digitally we have started handling this data, that 14 days number came into the systems, and it stays in the systems since then. But that is wrong number. So when we are addressing any time frame, when we are checking any time frame, these numbers are very important. So if we mark 14 over here, so relative strength of, so RSI is relative strength index, relative strength of buyers and sellers. So relative strength of buyers and sellers for 14 days, or if we are addressing or checking in weekly time frame, that says 14 weeks. So if on the basis of 14 weeks, if I start analyzing the market looks like this. I'll just add one more indicator. RSI, standard RSI. This is custom RSI. This we made or we have configured in this way, and standard RSI looks like this. 14, 14, and here you can add EMA. That is also okay. And the style is overbought region is there, oversold region is there, and this is the center. So just look at the chart and say, at this point, it looks highly overbought area and market can fall. That is what. So the chart is not so visible. So we will start from this point. So at this point, it says market was highly overbought, and that's the reason it fell. And now it looks like we are now in oversold region. So market may not fall below this. Okay. If we go in the past, like at this point, I am also marking this line.
See, at this point also it looks like overbought, but you can see market has still has a chance to go up, and it also went up. At this point as well, it looks like overbought. So there is lot of noise if we are fragmenting this data into smaller segments. So यहाँ पे भी टॉप दिख रहा है, यहाँ पे टॉप है, इसके आगे मार्केट जा नहीं सकता, ऐसा व्यू दिख रहा है. But that is not the valid understanding. Even at this point, you can see this is highly overbought. So these are all standard methods, but which are part of general knowledge, and general knowledge never works in the market, and that is the reason it is generally available. It is generally accessible to 99% of the retail participant, and they believe in this data and they do their trading or investment based on this. But if you look into this RSI gives you a completely different picture of same data, because there is only one reason: the fragments, like this data is analyzed based on 14 days of buying and selling strength, and this is based on 208 days. So this is too much of data. This is why too much of data, and why we need, if we are using weekly time frame, why we need to understand what is happening in 208. So I'll give you a clear picture now about Bank Nifty, how powerful this index, how powerful these numbers are, and what is the logic behind this. So normally, if you are part of market since last many years, you might have learned from somewhere, or you might have heard from somewhere, that bull run and bear runs are there. And bull and bear, if we combine, then this is a duration approximately runs for 4 years. It is like in 4 years, there might be 2 years of bull run, 2 years of bear run, 3 years of bull run, 1 year of bear run, likewise. Okay. So, in that case, if I want to analyze when next bull run is coming using weekly time frame in one entire year, how many weeks are there? The answer is 52. So, this 208 is nothing but, so this number is nothing but, if we calculate this, एक साल में अगर 52 वीक्स है, और अगर मुझे पता है 4 साल का बुल रन और बेयर रन होता है, so if I apply this logic and if I multiply this 52 weeks for 4 years, it comes around 208. After understanding this, I can understand the strength of buyers and sellers for 208 weeks, that means 4 years, what they did with the market. So you can see this point. So the numbers are also same: 0, 50, 60, 100, 50, 40, 30, 20. If you look into the RSI, this both the RSI looks same, exactly same. But the data fragments this information in completely different format. So in this, overbought and oversold regions are there. But in this RSI, whatever we have configured, we do consider market never goes into overbought or oversold reason. They just change their regime, or they just change their power. So the power is like, if RSI is above 51, for lifetime market can go up, up and up without any hesitation. Definitely there will be some uh, there will be some time where market is going to take some breath, or market is going to halt some time to gain some energy. But the when we say market is above, or any instrument is above 51, it can go to any extent until and unless it is above 51. When it is closing below 59, below 49, then the actual fall will begin, then the actual correction will begin. But you can see in index is not meant to go below 49. So that means, when this investor says you, like many investors, big investors are telling you, keep stay invested in market, there that is the only one reason. कितना भी फॉल हो जाने दो, आप अंदर भी रहोगे, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, कुछ भी हो जाए, ऐसा बोला जाता है. उसका ये राइट इंप्रेशन दे रहा है चार्ट. नाउ यू कैन सी 2008, दिस वाज ईयर 2008, राइट. लोग बोलते हैं कि we we can we can never know what is the top and bottom of the market. But using two lines theory,
you can clearly buy. Forget when the top is coming, when the bottom is coming. कैसे possible है? I have already covered this. आज I am going to only visit this. I am not going to build any understanding behind this. I am just going to show you a smallest representation where Bank Nifty can be mapped using two lines theory, and how powerful is that, and why we are saying that market is going to crash this time more than it has crashed in the past, like around 19,000 points. And you guys will also have similar understanding with stronger conviction. Okay, so this was the bottom, then there was another bottom, COVID bottom was there. Why we call this as an bottom? You can see this index shows it is oversold. This index does not, sorry, this calculation RSI 14 does not have any understanding or differentiation between normal bottoms and this bottom. It is like every time price is coming to this, we can see this could be a bottom and market is going to run. This could be over uh, bought region and market may not extend beyond this. But you can see, right? This looks like overbought region and market is still extended. So the simplest understanding for us is we should know if we are part of index. Index is not only driven by price, but it also driven by price range. So there is an important factor. Price is range bound. So why price is range bound in index, or why ranges are important for index? Because index is driven by FIIs. FIIs and retailers में फर्क क्या है? बहुत important फर्क जान लीजिए. What is the difference between FII and retailers, or FII or any other player? We normally have limited amount of money, so we normally buy or sell at current market price, 54,000, right? Current market price. But FIIs do have around 1 lakh times money. 1 लाख का मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, टाइम्स बोल रहा हूँ. हाँ, मतलब इनके पास 1 रुपया है तो हर 1 रुपये के पीछे इनके पास 1 लाख रुपया, ऐसा समझो. इफ रिटेलर्स डू हैव 1 रुपी, देन FIIs डू हैव 1 लाख रुपी अगेंस्ट, टू फाइट अगेंस्ट रिटेलर्स. मतलब 1 रुपये से अगर 10 लाख रिटेलर्स भी फाइट करने आए, दे आर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड इन देयर माइंड, देयर एनालिसिस, दे आर नॉट गोइंग टू बीट FIIs. अब ये साल में बोला जा रहा है, नाउ पीपल आर स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक FIIs are losing power and DIIs having more power, or retailers are having more power because of the mutual funds money inflow, everything. But see, this is not 100% right. I'll show you why this is not 100% right. ये illusion है. FIIs पिछले 26 साल से, in this 26 years, they might not have thought about it कि कब तो कभी ना कभी retailers are going to overpower their money, retailers are going to cross, retailers are going to compete with them. Yeah, there will be so much money inflow that they will, the retailers can beat FIs. They are thinking 10-20 years beyond your current understanding. सो आज जो हम लोग को लग रहा है ना, वो उन्होंने 10 साल पहले दे हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड दे हैव कॉन्फ़िगर्ड देयर अल्गोस. एंड इसका प्रूफ क्या है? व्हाई व्हाई आई एम सेइंग दिस? सिंपल प्रूफ है. चार्ट इज द प्रूफ, प्रूफ ऑफ ऑल द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है. मैं उल्टा यहां से पीछे आऊंगा, द एनालिसिस विल बी सेम. If I move forward from this point, the analysis would be same. Okay, when I was part of market since 2009. 2009 यहाँ से कहाँ से I started understanding the market, and there is a point 13th March 2020. यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है. डेली पे अगर जाओगे 13 मार्च 2020, दिस ग्रीन कैंडल, मतलब मुझे इतना टाइम लगा टू अंडरस्टैंड द मार्केट इज स्क्रिप्टेड. सो दिस ग्रीन कैंडल, इफ यू लुक इनटू द डेली चार्ट, सो डेली में अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्विच दैट चार्ट, उसमें हम कुछ बना रहे हैं, बट लेट मी शो यू दैट कैंडल.
Why I'm creating this background? Because again, market is going to change their ranges, and we should know the ranges, and that ranges will be revealed in this fall. So Bank Nifty is going to fall to 48,000, and in that it is going to. So this was COVID fall. What is an importance of any fall? This fall is nothing but saturation of their configurations of last algo they have configured, and their algo could not perform well beyond this limit. Why beyond this limit? These numbers are highly configured, they or these are highly coupled with their algos. So the numbers, when they achieve these numbers, they have to change these numbers in their systems. Those whoever listening this for the first times might have little or no belief on what I'm speaking, but you need to check my all the videos, and some of the proofs I'm going to show you today in this session. This is going to change, or this is going to blow in your mind that index is configured so tightly with these numbers that if you know these numbers you can do miracles, and one of the miracle is going to happen at 51,000, at 55,000, and 48,000. Okay, and we are going to ride that. Okay, so that's the reason I am giving you some background, so that it is going to create an conviction within short span of time. Why I am saying conviction in short span of time? Because to understand market in this way, you need to observe market continuously every day, at least for 2 and 3 years, then you are going to get that confidence. But now if we have very less time, like market is actively performing some moves, and if you want to understand the logic behind those moves, I am going to show you some numbers and how we can use those numbers effectively, and the same pattern market is going to repeat now, and if the market is repeating that pattern, we can definitely catch that move, and that could be catching more than 4,000 point in one single trade, maybe in 1 or 2 days. That is going to happen in Bank Nifty. I'm talking about 4,000 points. If we do not practice, if we don't have practice of catching 50, 100, 200 points, then catching 4,000 points will be a blunder. It is not so easy. Okay, but at least I can give you some proofs. So this was the COVID fall, and if we look into the market with the daily this uh, with the lenses of daily fragments, मतलब daily के time frame पे अगर हम देख रहे हैं, so you will see something magical has happened in this. From this point till this point, the market fell miserably. It was also scripted. It was also written in the chart that market is going to fall from this point exactly to this point. I'll also give you, if we get time, I'll also give you some proofs of this. So यहाँ से यहाँ तक ही गिरेगा. यहाँ मतलब certainly, just a moment, certainly up to this point ऐसे था, but because of the panic it went some layer somewhere, some level below. But in this entire fall, something has happened, and which it is like normally we do come in market for trading and investment. That means the ultimate motive is making money. But if you want to make really a good money or wealth from the market, you should know the background behind the chart, why chart is behaving like that. And if we don't know the answer for this behavior, then it is not going to give us some benefit. Okay, so this entire fall was scripted, and in that, this is green candle on 13th March 2020. Someone might be so mad. Like this was the point. 13th March 2020 candle was a proof for my theory, two lines theory. And so I first, like in 2016, as I said, I'll go to the this part. So from 2019 till 2016, 2016 is this.
2016 October. So from this point to this point, I have lost around 22 lakhs in market. 22 lakhs in trading and investment सब पकड़ के 22 lakhs. Out of which 8 लाख सितंबर तक गए थे 2016. And I have taken a good amount of loan. 15 लाख का लोन मैंने ले लिया. And I have lost all these 15 lakhs. 15 का मतलब 15 पूरा जाने के तक नहीं रुका मैं. I kept some money, but I could remember around 12 to 13 lakhs I lost in 3 days, like October 16 October to 19 October. In that period I lost all my money. And since then, from this point till December 2017, December 2017 किधर होता है? December 2017. So from this point till December 2017, I have only analyzed Bank Nifty chart 6 hours and 15 minutes every day. तो ये जो entire duration था, I have spent my time in understanding only one chart, trading only one lot at a time, booking profit or loss, writing down, noting down everything. इससे क्या हुआ? After 2017, I published 16-page document. That 16-page document is nothing but a theory which says market is scripted and this is handled within two lines. Depending on the time frame, the distance between two lines is big or small. So if we are talking about weekly time frame, the distance will be really big. Distance will be really big within two lines. So I am going to show you one of the two lines which is highly predictable or visible on weekly time frame, and the distance is nothing but 6480. So if we mark market by 6480 points, this is 6480. Okay, so the entire 2008 crash was happened between 6480 points. The dimension of 2008 fall was 6480 points. Okay, now as I said, on weekly this number is fixed, 6480 is fixed, and I have analyzed market only for this period, and I could understand whatever understanding we got is applicable for the past and as well as future. So past is done. How it can be helpful in future? So at this point, 9th September 2019, I am just explaining this background because something big is coming, and your belief will distract you from grabbing that amount of money. Please थोड़ा screen, हाँ बढ़ाऊंगा मैं screen. I'll zoom in the screen. I just want to give the reference of the dates, and then we are going closer to the screens. Okay, so for this, like for this zoomed in chart, we just need to understand the time reference, and then we will go and check the screens. Okay, so see, there would be 9th September 2019, this date. At this date, I could say the Bank Nifty is going to fall approximately by 8,000 points. Why? How? There was logic. And during the fall, we are going to get the new ranges. That is also been shared with the community. And the actual fall started on 14th Feb. So I exactly remember because I was on vacation, and this is the 14th Feb. This is 14th Feb. So at this point in this week, at this point, actual fall started. And then whatever claim I made on 9th September in a public domain, those participants started asking me, how can you say the fall is going to happen? I said, wait for some time, and then fall actually happened. And the fall went up to 8,000 points. Then these guys asked me for the session. Okay. So I have already started taking session. So the very first session of Black Pearl started on 14th Feb 2020. That was the first day, 14th Feb 2020, where we recorded the first session.
After that point till today, we have conducted around 16 different batches. Why? What is the purpose behind this? To understand the market structure and capture the market movement, so that if similar kind of market structure will be there in coming future, we can apply that logic and we can execute the same trades. Okay. So let me take you back to this 6480 points move. Okay. So to observe, like the chart is too big, I will shrink this using monthly time frame. And now I will show you. So the 2008 crash was exactly of the size. Monthly closing अगर हम देख रहे हैं, then that number is 6480, within 6480. This, imagine this is 6480. Okay, I'll just mark. So I'll go fast from here because we also need to cover future, what is going to happen to the chart in coming future, right? So just imagine this is 6480 and this was the first fall. Entire fall has absorbed within 6480. Okay. The reason is because, okay, what is the two lines theory and what is the significance of two lines theory? So RSI we are not going to discuss in depth. RSI tells us that index is always meant to be stay positive. Okay. So there are major corrections and temporary corrections. So major corrections can bring index near 49. Minor corrections can bring index up to 51. They are not even touching 51, but the price will meet its valuation. So the price is elevation of its value. So this is the real value. EMA is the real value, and this is not normal EMA. This is, again, if you look into this, I'll just show you weekly time frame. So this is nothing but 208 EMA. So what has happened to the price, how much it has elevated and how much it has come down, it is based on 208 days ka average price action. So that says if RSI is above 51 and price is touching EMA, then that's a minor correction, again minor correction, again minor correction. If you look into the dates, 2011, 2013, 2016, you are aware of these dates. And no one knows the bottom is going to form over here, but bottom has formed because the index is meant in following such pattern. So COVID time this was this, and now 2016, you can imagine after 20, it should happen after 4 years, so 2024, but it has delayed. So that means the correction is going to happen, and then price may come to, sorry, the RSI strength may come to 51. At the same time, price may come to its value, or it can go below the value like this because it is delayed one, right? So it can happen. So just imagine we are going to analyze this 6480. So two lines theory says, market will get consolidated into two lines, and whichever side it breaks, it will run for two times of this. And then this is called as an primary run. After every primary move, there will be a secondary move. So if this is primary move, then one third of this, that means this is one third, right? If this is complete move, this is one third. So one third is the secondary move. Again, market will go for primary, again one third of this move. Likewise, market is keep moving. Okay. To show you the proof, so imagine if this is the range 6480, which is still visible. So since beginning, suppose market is ready with 6480 range, just consider this as an imaginary number. And then if I make three times of it, so three times of it मतलब 6480 का three times कितना होता है 19,000. So 6480 था ये, तो 19,440, right? So from this point
till 19,440, market will go in a straight line, and if it is falling, it will have a capacity to take a maximum fall of 6480 only. That is how uptrend is built. Now imagine if the same rule is applicable for 19,000 range. So to fall by 19,000, how long market should run? 3 times of this. So I'll mark 3 times of this, right? 3 times of this is nothing but 58,320. So from this point, market should run to 58,320. Can you see this 58,320? This is 58,320. This is the point 58, जो भी है ये point है 58,320. So at 58,320, just a moment, 6480. So no 19,000. I need another copy. 19,440. ठीक है. So 6480 3 times is 19,440. So after 19,440, again it has gotten capacity to fall by 6480. So this was very first 6480. This was not up to 6480 because valuations uh, has acted like obstacle, and price did not fall below that, but this was 6480, right? Then there was an COVID fall, and at COVID fall, so now I remove the reference. So at COVID fall, so we are talking about weekly, and this is big chart, so we should switch to monthly first while explaining this 6480 ranges. See, so first, second, this is third. At COVID fall, instead of falling by one step fall ke jagah pe, it has exactly fall down by 2 steps. So this, as I said, this was the exact bottom, right? Then Ukraine war exactly stopped within 6480. Can you see this? Then there was a fall after election rally. This is exactly stop at 6480. But now the price has first time closed below 6480. So this is not normal. And why price should close below 6480? Because price has already reached to 3 times of 6480, and then and only then it is going to get that power, right? So we are already above that, certainly by certain points extended, that is also fine, but then and only then it should gain in power. How? So every time, so like this COVID fall, so this was 6480 before COVID fall. So from this base, when new 19,400 rally started, price reached to the second 19,000 and 2 times fall has happened, right? Now price is reaching to the another 19,000. So 3 times rally, 3 times fall should happen, and then price should come to. So from the top, we are marking from the top, it has a capacity to come to 41,000, and we are going to discuss today only up to 48,000, 48,300. So this much fall is possible in the price, and we are only talking about 48,000 right now. Okay. So and these numbers, if you go and mark, the chart is same everywhere, and nothing, it is nothing like us. Even with smaller points, this is not going to change your analysis, because this is exactly picture perfect. Closing to closing is within 6480, and this is first time we are below 6480. That means 19,440 fall is precedented, and then another 58,000 rally will be there, right? From the low which is marked, which will be created by the market. And
How I got this number? This number was visible on, as I said, Nifty or Bank Nifty or any index. If you go daily time frame, control 0, daily time, hello, right? So this daily time frame, this big candle, 13 March 2020 candle, size of this is nothing but, if you calculate this is 4320. Then what is the relation between 6480 and 4320? It is very simple relation. If for weekly time frame the range is 6480, if we make a one third of this, then that comes around 2160, right? And if we add 2 times of 2160, 2160 is one third of suppose 6480, and if we multiply it by 2, this is 4320, right? Again, if we multiply 2160 by 3, it is 6480. So these numbers are related to each other. And if I use that number, same number now, so that means 2160, 4320 and 6480 numbers are going to now control the market. Do you want to see how it is controlled? This is 4320. This is 4320. This is 4320. How much is this fall? This is 6480. Like we are on daily, so we need, if we go and check by body to body, it is 6480. This is 6480. This Ukraine for is again 6480. This is 6480. After this, every time when market went up, except this, only this fall is 6480, but rest of other fall are 4320. This is, if you observe with weekly, 8 times market fell and it failed by only 4320 points. So if you see this, after this rally, after this Ukraine fall, this is 4320, this is up to 4320, this is 4320. From the top, this is first time 6480, again 4320, and this point it has closed below 4320. And this also says if market is closed below 4320, it has to come to 2 times of this. So that means 48,000 is must for the market. And at this point, it will look like bottom is done and market is going to fall more further down from this point. Okay. This will not be the bottom. We are talking today, which is 24th May 2026. And how we are going to reach to this point, what will happen to this point is already, the script is already written in the chart. Okay, I am going to demonstrate you, show you what is there in the script from this point to 48,000 today. Okay, but now see this. What is the proof that market is going to fall? So when market was moving up, when market was moving up, it could fall by 6480. Moving up to go further in the same direction, it is restricting move. When the down move is coming, it is restricted to 6480 and continuing up. Again restricted to 6480 and continuing up, right? That is what we have seen in this big this 6480 moving up, 6480 moving up. Only COVID -1. It is an scenario which we call it as an short building and short covering, right? Shorts are built by knowing the opportunity कोविड फॉल आने वाला है, इसी टाइम पे करते हैं. लेकिन कोविड में नहीं डिसाइड किया, दे हैव नॉट डिसाइडेड इन कोविड, दे हैव डिसाइडेड वेल अहेड ऑफ द टाइम एंड देन दे बॉट प्राइस अप टू दिस पॉइंट. इधर ही क्यों किया? देयर इज ऑल्सो लॉजिक.
So at exactly 2x, they have planned it at exactly 2x. इस पॉइंट पे उन्होंने प्लान किया, 2x लगिश था, माइनस एंड 3 times. So this is also one of the pattern which I'm not going to cover today, but similar pattern is going to happen on the chart now. So 6480, 6480 not be 6480 not be 6480 not be 6480 को कट कर दिया. So that means now from this point, so up to this point, how market ran? Market ran like uptrend, limited down 6480, or like this, uptrend up to 6480, uptrend not up to 6480 but limited down, uptrend up to 6480, uptrend up to 2 times of 6480. Second time क्यों लिया उन्होंने? Because they want to build a short and cover the short in short duration. V shape recovery करना था. Then again uptrend, limited 6480, uptrend 6480, uptrend. Now they have broken 6480. The moment they have broken 6480, क्या स्ट्रक्चर में चेंज होगा? एक्सटेंडेड बिलो एंड लिमिटेड 6480, एक्सटेंडेड बिलो लिमिटेड 6480. कब तक ये नाटक चलेगा? जब तक 19,000 नहीं पहुंचते. Till this point, market is going to come back by 6480 and going to fall down. Just let me in chat box, have you understood this point on the scale of 1 to 10? Chat में लिख दीजिए आपको सब कुछ समझ में आया क्या? Then I need to address this point if you know the background now. Last point, 19,000 fall in Bank Nifty is going to happen. So see, uptrend, how uptrend? Dow theory, if we know Dow theory, what is the sign? What is the component of Dow theory? Dow theory, we have primary trend and secondary trend. Primary, secondary. Primary, secondary. But in this entire ecosystem, stock market में, India में, no one clearly knows what is the length of the primary trend and what is the length of the secondary trend. We know it. These numbers are known to us at this point. I am saying at this point. यहाँ पे तो मार्केट ने प्रूफ दिया 13 मार्च को. सिंस दिस पॉइंट, जब से मैंने बोला 2016 से लेके आई हैव स्टडीड मार्केट और सिंगल चार्ट ओनली बैंक निफ्टी फॉर सो मेनी years, and then I published that document which says the market is scripted, and once you know the script you can do this. So that script says primary run strength length, if it is known, we can also know the secondary length of secondary trend, and using that if we start mapping the market like Dow theory, market will make high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher. This is also higher low. This was the previous low and this is the higher low. Then again higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Now this time it has created a low which has a potential to create what? Lower high and then lower low. Why? Because 6480 प्राइमरी का जो सेकेंडरी चैलेंज था. सो प्राइमरी स्ट्रेंथ कब ब्रेक होगा? व्हेन प्राइमरी ट्रेंड विल टर्न इनटू सेकेंडरी, व्हेन मार्केट विल शो द करेज टू ब्रेक बिलो 6480. क्या मार्केट ने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वो करेज दिखाया था? नो. कोविड वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज टेम्पररी ड्यूरेशन नीचे जाके ऊपर आना था, वो उनका मोटिव था. बट दिस टाइम they have shown by closing below this. So that means now if I want to understand market is literally going to fall, what should be the first sign? First sign is when market is closing below 6480, when if it is coming back, it should close below 6480 and it should continue down. Right? Is this point clear? Just say me in the chat. Just confirm so that I will move forward and focus in this on this point only. Okay? So that says now we should understand what is the next plan for the market. Okay? And the next plan is nothing but now Dow theory will work, but for downtrend, not for uptrend. So what is the downtrend definition of downtrend? If market closes below 6480, it will come up to 6480. Again, it will extend below 6480. It will come up to 6480. Likewise,
हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू, बॉटम कब बना है वो बॉटम 1/3 मूवमेंट हो जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन स्टिल वी विल गेट सम एडवांस क्लूज. कैसे? What is a sign that market is going to create new up move? The simplest sign is from any low. If the price is closing above 6480, new up move will start, and this up move will run for another 19,000 upside. But as of now, market closed below this. So that means now down move has started up to 19,440, and for that market will create limited up move and downside, limited up move, extended down move. Okay. So now we are going to postmortem this move. How price is going to reach to 19,000? It is so magical. If you look into the chart now, I have already, so because we may get less time, and that's the reason I have already created that complex structure. See, so this was very first journey where price closed below. What is this? This is 2160, right? This is 2160. And if we look into daily, see. So the moment price closed below 2160, it got an capacity to fall below 6480 or up to 6480, right? So this is like after this, the price could go below 6480. That is for sure. Why? Because we are already above 58 320, right? We are already above 58 320, and that's the reason I have explained you, right? I have explained you this on big. Okay, this was only the big time frame. So if we are above 58 300, then and only then price will get a power to close below 6480. So it has closed below 6480. So after this closing, what has done, what price has done? So it has started taking reversal. It wanted to extend below 6480. It took a reversal. So first reversal में week to week पकड़ूंगा. If week after considering week to week body भी close हो रहा है body के ऊपर, then we will go to body. But for very first move, I will now remove all the lines, these lines. Okay. So see, from this point only limited 2160 has happened, right? Then from this low, you can see approximately 2160, hardly thoda sa upar gaya hai, but it is 2160. But then from this point, it has closed above 2160. The moment it has closed above 2160, that means it can go to 6480. So ये 6480 तक चला गया. But there is an additional noise, or maybe retailer got panicked, and for certain duration, like दो candle के लिए it was beyond 2160, 6480. लेकिन to reduce the noise, we should go for higher time frame. Daily पे है, we should go for higher time frame to ask कितना ये लिमिटेड 640 है क्या. तो वी नीड टू चेक बॉडी टू बॉडी, और फर्स्ट लोएस्ट वीक देखेंगे, लोएस्ट वीक के अंदर है क्या. नो, स्लाइटली ऊपर गया है, तो बॉडी टू बॉडी चेक करने के लिए वी विल गो टू अनदर वीक, एंड वी कुड सी if the highest point is taken, all the price action approximately, forget this 5%, 90% of the price action says we are in the limits of 6480. So that means what market is showing us now. So first 6480 is broken, right? Then market went for limited 6480. So that means what will happen now? The price first extended below 6480, limited 6480. Now it is going to extend below 6480. Is this point clear on the scale of 1 to 10? If this point is clear, then and only then I'll move forward. Just say yes or no if this point is clear. Okay, so now we are going deep into this.
So that says now price has to come to 48,000. And also price has given some targets by FIS. Okay. What are those targets? यहाँ पे आने पे प्राइस को करना क्या है? प्राइस हैज टू कम टू दिस पॉइंट एंड यहां से शार्प ऊपर जाना है प्राइस को. दैट इज व्हाट इज रिटर्न इन द प्राइस. कितना ऊपर जाना है? 6,000 पॉइंट जा सकती है प्राइस ऊपर. एट 48 6,000 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है. ओके. एट 48 प्राइस विल क्लाइम बाय 6,000 to 7,000 points. The body to body closing will be within 6,000 points. Okay. So that means the price, the target for the price is not to come to this point. Okay, I'll just bring another chart so that things will be clearly visible. Then I'll do this rest of the things on the chart. ये क्या हो रहा है? Okay, so we are in weekly. So what I'm expecting from the market now? This 6480. So that means first week to week, we will consider week to week only. So when the price has closed below 6480, it will come up till 6480. You can see on the chart, right? And then again, it will go, okay? Like from this point, when I say it went below, that means it has not stopped itself to 6480, but it went to this extent up to 11,000 point, right? So if we apply the similar logic, not exactly 11,000 fall we are expecting, but price have scope, price do have scope, but we will extend this fall up to extended 6480 means up to 48,000 we will expect. So 6,000 points and another 2,000 points. 6480 plus 2160, approximately this many points. So 48,000 we will think about, up to 48,000. That means now the price will act like this: extended low, limited low, extended lower low. After touching this limited higher low, again it is going to extend, and this kind of nature price has to perform reaching till 41,000. Why 41,000? Because price has to continue up move on bigger time frame. अगर उसको resume करना है primary trend, it has a limit till 19,400. इधर तक ही आ सकता है. So till that point price has to fall like this. Okay, so this is how it is going to fall. What if the price closes above 57,500? Above 57,500, इसके 57,500, right? I'll come to that point. 57,500 इधर तो जाना पॉसिबल ही नहीं. 57, even 57,500 is not possible right now. If it is touching 48,000, then it may reach towards 57,000. Otherwise it will not have capacity to reach to this point. क्यों कैसे बताता हूँ. Okay, so now we know the top view. Now we are going into the depth of individual legs. What is happening inside this? So we have already observed what has happened inside. We have already covered some of the trades, right? Some of got panic in this move, but as we started very early and market did not confirm their move, so we got panic. But now we know the script, and now we are going to run this script again. Okay, so let me take you to this patch. What is going to happen in this patch? So for that we need hourly time frame. I'll remove rest of the things from the screen.
see the next lower high will be approximately 55,000. As I said, price will not come to 56,500. Next is 55,000 and next lower high will be 54,200. And once the price is reaching to 51,000, then it will come to 55, closer to this 55,300. This is 55,300. This is still 56,500, but this is 55,300. Okay. And then it will fall up to 48,000. Why? Because when price started traveling down, it has also created certain challenges in the price. And that challenge is nothing but this range. This is 1080. Now this number is also related to 2160 or 6480. How is it? I'll show you. So currently I'm openly sharing everything with you. If you know this number, you can make miracles. Don't use this commercially because IP rights are already claimed on this two lines theory. It is trademarked, whatever. So what I'm saying, 2160, 3 times of this is 6480, 3 times of this is 19450, and 3 times of this is 58,320. This can be observed on monthly chart. This can be with weekly chart. This can be with daily chart. This can be with hourly chart. Valid? So to add the challenge, what they did on hourly chart, they have introduced a new range, which is 1080. Even they had introduced one of the range in like which is lesser than daily and hourly, which can be observed lesser than daily but bigger than hourly, which was 2 times 4320 was observed. Now they are manipulating with 1080. What is 1080? This is 1080. So what is happening to the price? Price is taking action in terms of chunks of 1080. And what is the significance of that? So that means if we closely observe 1080, they are using this range 1080, and I would also like to add 2160. Okay. Why 2160 is important? Because the moment price is closed from the top, if price is closed below, so this was the recent top, and from that point, the moment price is closed below this, price gets a capacity to fall to 6480. This is because of two lines theory. This is an observation with two lines theory. At the same time, Dow theory says this. When we are closing below primary range, it extend the next bigger primary range. So if the price is closed below 2160, the extension or now price has a scope to fall up to 6480. So that's the reason it has done. But as I said, now the chart is so scripted that it has internally built 1080 range, and the moment 1080 is broken, price is taking a up move up to 2160. So this shows it is going limited to 160, again extending below 2160. Again it has to go to 2160. Currently we are in this patch. And now you know the reason why last week I said from this point we should not continue downside. Definitely price is going to move down, but it will add some damage in our PE position. So better to exit and take CE positions up to this point. And after this point, we will again switch to PE positions. Again, if it is reaching to somewhere over here, and from that random point, any random point, I have approximately stated 50 to 100. If it is closing above 1080, any movement, then again 2160 move will happen, and limited 21 after limited 2160 move, it will again come down to 51,000.
And at exactly 51,000, what is going to change in the price? Nothing but the price started running for these two lines, and the target of this 2x of two lines will be achieved, right? If that is achieved, that means the sharp rise of 4,320 points is going to come near about 15,000, or it can exactly come at 15,000 or 50,900, 50,800. Thoda sa turbulence will be there, but at this point price will have to run like hell by showing temporary bottom, and then after reaching to 53,000, 55,300, what has happened? It has run for 2x reversal up to PZ. Then it has to run for 3x downside. Now, many of you will not believe it. Like this is going to happen to the price. How this can be so scripted? That price is dancing towards the target and the moves is like this. I'll just mark this move. Imagine the price is restricted within this boundaries and the target is 2x like this, right? And third x is somewhere over here. So how the price will act? So from this point, price will first break below. Suppose by doing something, price reach to this point. From this highest point, price will break below this, and then when returning, it will go to the limited 2160. Again, it is going to come down, extended 2160. Again, it will come to 2160. Likewise, it is going to perform this, and it has reached to this point. The moment it is reached to this point, the sharp rally till the boundary of this PZ is going to happen, and this distance will be 2 times of 2160, and after that price will again close below 2160. First 2160, second 2160, likewise it will reach to third 2160. This is going to happen to the price, and you can see this, right? On the chart. If you look into the chart, that is what is getting scripted on the chart. And to show you the proof, let me reverse this, invert this scale. Okay, अब मैंने उल्टा कर दिया, and I will go to past. 4 June election rally, you might be aware, right? 4 June 2024. This is election rally. Can you see the same chart? I'll just make it. See. So price from this point extended, reversal to 160, again up to this 2160, again up to this 2160. Likewise, when it has reached to 2x, this is 2x. There was a sharp fall. I have inverted the scale, so there was a sharp fall, and then up to 3x sharp rise. So to make it very clear, I have taken a screenshot of this, and exactly mirror is happening on the chart. So this was 2024 rally. Can you see the same script? Limited to 160, 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 exactly 2x and sharp fall, and then 3x. And then what is happening right now in the chart? Below to 160, limited to 160, limited to 160, likewise 2-3 times will going to happen. And at 51,000, it is not about depending on counts. एक बार होगा, दो बार होगा, 3 times, 4 times. Until it reaches to 51, it is going to take U-turns of 2100 and it will touch. And then the moment it is touching 55,300, from that point it will go for 3 times downside. Is this crystal clear to everyone on the scale of 1 to 10?
Just share your view in chat. Share your understanding. What is CC? Crystal clear. Okay, fine. So that means now we should observe whether whatever we are saying is happening on chart or not. Right? So to confirm that. So from 54 200 fall of 2100 and again bounce 54 200 beyond 24. It will go below 2100, right? But suppose from in the middle somewhere it is again coming back to 2160. It is okay. But if it is touching 51,000, then after that, whatever pullback is happening will not stop at 2100. It will go to two times of 2100 and then it will stop. And if it is stopping at this point, then this sharp fall of 6,000 point is going to add more panic to the retailers. And at 48,000, if we go into the past, it will look like the bottom is created. इधर जब जाएगा ना तो लोगों को लगेगा भाई बॉटम हो गया है क्योंकि ये इधर किधर यूक्रेन वॉर के टॉप पे आ गया है एंड देयर विल बी सो मेनी दिस इज यूक्रेन वॉर इफ यू नो यूक्रेन वॉर जिनको चार्ट पता है दिस पैच इज यूक्रेन वॉर तो it will create an illusion that we are getting stopped at the top of Ukraine war. That is wrong. ओके ओके ये यहाँ पे भी नहीं सॉरी पहले 48 का ही बात करता हूँ यूक्रेन वॉर के भी आगे का बात करेंगे बट 48 दिस लो इस लो पे वो इल्यूजन आएगा सो एट 48 द प्राइस में टेक अ हॉल्ट ऐसा इल्यूजन आएगा बट प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक दिस लो एज वेल मार्क माय वर्ड वी आर डिस्कसिंग टुडे on 24th May 2026 and for SEBI or for retailers not for SEBI I am not SEBI registered I am just crazy about the chart to take your financial decisions take advice from your smart financial advisors don't follow me at all I just want to analyze charts and I am analyzing and putting my efforts in analyzing the chart and this is all for educational purpose okay so that means now we should know this script and that is what I'm explaining to you so can you see the exact mirror I'm again inverting the scale so this was happened on the chart it was so picture perfect it was so beautiful and as I said this 2160 or this range which I got on 13th March 2020 right what I could do with this so I was 100% sure when market will reach to 2x of this at this point I opened short I shorted market and around 12:30 I exited my positions and build new positions and that is what is available on Twitter to cross check so someone also asked me to show the real proof that I have got 7,000 points so this was that proof and this was the script which I have openly shared on Twitter before the fall as well. And in Nifty, in Bank Nifty, on both these scenarios, it has happened. And there is also a screenshot. So this was that 1 day PNL, 4th June. This is the only screenshot available on any of my social platform or with my community where I have shown the profit in terms of money. Otherwise, in this last 7 years, I have never published any of the results in terms of money. This was not meant to showcase or flaunt the result, but someone asked me the results are not real and for that I had to share this only this screenshot is available so 4 June 2024 election result and as I said okay where is that so there was also one post yeah this was the post which I made before the rally because during the run there can be multiple views but the moment we are checking all the points the views gets change run time and that is how it change and we were thinking about more downside but as it has confirmed
all the views, it has given us that confidence. The 4th June, just a moment, I'll just show you if that is marked. No, Bitcoin, no, no, no. Okay, now I'll not get it. Fine. Okay, this I got some screenshots. So that was V-shape recovery. You know, I have shown you COVID time V-shape recovery. So at this point, we said till 49,000, market will not take an reversal till 17,400. And if you go and check the chart, it will openly show you. Okay. So see, this was that screenshot I was waiting for. So this I have posted exactly on 4th June to prove that point that market is scripted. And this exact time 12:20, 12:40, if you go on chart at this point, so I said something is fishy. If Bank Nifty is closing above this green arrow mark line, that means it is a trap. And if we have reversal closed above this, then that says BJP will definitely form a government, and we can see 3 times of reverse rally plus 3x. This shouldn't happen in a day. इधर से 3 times जाएगा, ऐसे बोला है. And what was happened to the rally? If you look at that rally, यहाँ पे बोला है 1240 पे. This is 3 times. इसके बाद what has happened to the chart? So this exactly is going to happen now, but in downside, not upside. So this is 2160 first. And this is also beautiful. If you go and check this run on the chart, this is 3rd of, and this is where price has to take halt. और आगे का देखो price के साथ क्या हुआ है, right? It has taken a halt. But even in this entire rally, price did not have capacity to fall below 750 points. यहाँ से यहाँ तक 750 continuous without closing below 750. This is 6,000 points rally has happened, and the similar rally is going to happen when price is touching. Mark my words. Don't get panic. Don't get rush into this. This is not easy to handle. Today we are learning this. That does not mean you are going to exactly execute this on your account. It is highly impossible. I am saying if you miss the chance getting here for up move, it is still fine. At this point, it will be the safer journey. It is going to happen within a month or 1.5 month. This may happen in a day, 2 day, or in within a week. This is going to happen. At 51,000, the sharp rally is going to climb 4,320 points. And what is the proof? So we got first reversal, which is limited to 160. Now what we are waiting? So even last week we did one trade, right? क्या था वो trade? This was the trade, right? So we took a trade at this point, and we were at this point. We exited. I think we exited PE somewhere over here, and then we took C. I'm not sure we took C or what. I'll No, just no, no. Can I explain? no, later we will think Okay. about it. I'll just go to another copy. Uh, Load open layout. Not in this. 1 hour. See. So okay. I'm not going to address the trades, but see the structure. So this is the similar structure price was showing. So again, this was the range. This is
How much is this? 292 points, which is a smaller range. So if we go back to this, go above this, approximately one third of this is 720, but the exact number we know it is 750. Okay, approximately one third of this is 240, but exact number we know 292. Why this number? Why is the number 292? Why 750? There is also logic. 292 is also a magical number. If you know, everything is hidden in this 292. So if you multiply this by 2, it gives you 58,400, 58584. And if you multiply this by 100, this is nothing but the point where market is going to crash, 58,400. Okay, that is what is written in this number. And if you want to know this, that's the reason I am saying, if you are interested in knowing these numbers, logic behind these numbers, and you don't want to be handicapped or dependent on this, on me or on whatever we are learning, then you can attend the Black Pearl 16 session where I'm going to explain all the relation to this. Okay, so what has happened? 292 was there, and market ran for 2 times of 292, and it has formed another PZ. So at this point, market got an capacity to throw price downside, and that's the reason I said we should get a chance to enter at around this point, or this point. So I have created a screenshot. Was it there? I had I posted this on ABCD, किधर डाला था ABCD? No, I'll just show you in the hmm. We'll wait for loading this. Just a moment. Okay. See, this was the screenshot. So at this point, we said either we are going to get entry at A, or market will go from this only upside. Every move is showing, or uh, every structure is showing the market has to run upside. Okay, so either at A it is going to run for this 4 times, either at D it has to run for this 4 times, and fortunately market opened in within this range. So that means D is not going to broken below, and now the market has to run to upside. That is what has happened in the chart. If you look into the chart, this, so it has run for 1, 2, 3, and we are entered into the fourth. And after that, it has fall down. Okay. So when it fell down, even we know this. How we know this? Because it is already scripted. So if you go like this, so after reaching this point, there will be 750 points fall, and this, in this rally, it is going to break 1080. That is what it is written in the chart. And once, so that says if this is the distance from this point to this point is 1080, the moment it is breaking above this, now after Monday, market has to reach to this point. That is what is going to happen to the chart now. So there will be one obstacle in this journey, which is this line. This line is nothing but the actual valuation. So that can stop the price, or if it is not stopping the price has to reach to 54,900. So from this point
till this point price has to run. Why? Why not before and why now? Because if you look into the previous charts, what is what is done with the price? What is happening with the price? It is so easy to understand. See, price is coming down, and while coming down there is limited 1080 moves are happening. Limited 1080 moves are happening. Okay, 1080. The moment it is breaking above 1080, it is going for 2160, right? So that means I had to identify same thought process if it is happening over here. So what I got a point from where price went for from low to 2160. Okay, that is done. Then again low to 2160 is must. So that is what is also done. Now price is first time crossed above 2160, and that's the reason we could carry C positions last week. And then price has to touch 55,000, 59,950, whatever. It is going to touch to 55,000. And at this point, again, the rally should go down. And if this is happening, if price is again getting restricted at this point, then that means it is again given as given us an additional checkpoint, and with this checkpoint price will confirm to go down. So first is done, second is done, similarly three or four or five occurrence will happen. Up to how long it is going to happen? It is equal to two times the distance of total three times the distance means 6480, right? 6480 is this is 6480. So approximately 51,000. What is that? 51 क्या था वो? Where is that? So if we are counting from this point, this should be the point. 50,800 or 51,000. Up to this point, 50,900. You can get exact number if we minus the high. So I just need to go to daily, and I just need to check the high or closing of this. Sorry, opening. No, sorry, in this case closing. So 57,371. 57,371 minus 6480 is equal to this minus this. 5891 would be the reaction point. 50, not 51,000. This is exactly 5891. Mark this number. Okay. So at this point, there might be one, two, or three, whatever. Because it is a fall, the maybe the number will be lower side, not exactly 4 or 5. But this acting will be formed, or this acting will be done until it is reaching to 51,000. And so that's the reason. So at this point, it was not above 1080, but at this point, it was closed above 1080. So that's the reason we said the price has to close above this and reach to this point. And the moment it is reaching to this point, the again down move will start, and likewise we will get another 2160 if we get another. But the moment it is touching to 51, this should be a sharp rise of 4320, and believe me, it should be done within 1 day or two. Matlab, I think we need a good news, war is ended or whatever, a strong news which can bring market from this point to this point. Okay. Now to take entry at this point, if this is happening in live market, Pearl Mind 4.2 is going to help us. But is this structure crystal clear to you all? Just share your views
in chat. Share your queries in chat. And as I said, we are going to discuss everything towards the end of this session after explaining 4.0. I just need to publish this on like with some colleagues, so that with some not colleagues, traders, and that's the reason we are not discussing anything out of. Yes, Mandraj, share your doubt in chat only if it is important or relevant to this. Otherwise, we can address this by at the end of the session. What is 19440? 19440 is the range which is 3 times of 6480. Jay sir, maybe you might be listening this for the first time. So I have also some recorded some videos which can explain you what are these ranges, how what is the significance of this, and I'll share this in with you on WhatsApp. If you know my number, WhatsApp number, you can just ping me. I'll share the videos. Okay. Now, so this is done with analysis. So we are done with the analysis. Only difference is, so Bank Nifty was going down. Nifty had some other plan. Nifty will still go up and correct down. Go up means Bank Nifty suppression is happening downside. Nifty is suppressing on upside. Let me show you. See. So Nifty again, when Bank Nifty is making this 2160 move, so ranges for Nifty and Bank Nifty are different. And that means from this point, Nifty has to touch 802 points. So Nifty should come to 24,000 to fall again. And then this is again similar to, so this is again similar to the move which is happening on 4th June. And for Nifty to get that reaction, Nifty has to reach to 22. Nifty should reach to 22,200. At 22,200, at 22,200, we should expect a sharp reversal. And you can see this is exactly happening around this point. So there must be some panic happening at this point while breaking lower low. Is then if we get this during live market, don't get panic. If you want to try and test this analysis, trade with only one single lot, not in current expiry. Maybe if there is an, if we have enough time left in the current expiry, then and only then we will try to execute this in same expiry. Otherwise, we should execute this in next expiry. And you will believe me or not, if we get that entry, you just need to be part of Nifty Bank Nifty group, Nifty Bank Nifty analysis group. We are going to get 1600 points move in Bank Nifty. And if we don't have courage to do this, what will happen? You need to collect some profit in this move while going down. Put that profit on the risk at this point. Collect the profit from here. Put again some portion of that and catch another 2400 points move. Okay. So this is done on Nifty Bank Nifty side. So let's move to Pearl Mind 4.0. So Pearl Mind 4.0. So after your inputs, I have tried to optimize this algo, and this is what we have achieved. Let me show you. It is so interesting. So now if you see the result, just a moment. See, let me hide this. So
we could catch with this improvement, we could catch 8,000 points on spot. And if we combine all the negative trades, it is coming around minus 3,500, and still we could have kept a residue of 5,000 points. Like, it is not showing all the duration, it is just showing few candles, like around 90 or something candles, not even 90. So for this week we can say 3,000 points were there, the possibility of catching 3,000 points. And there might be, like, with this proportion we can say out of 3,000, suppose we lost, this could be the total positive. This is addition, and this is not okay. So this is including plus and minus, this is not only plus, this is by including plus and minus. Residue is 3,000, that is what it is showing. Okay, so let me take you to this indicator. Do you remember the last patch? This was the patch, right? When we had to take 10 trades, or 10 to 8 trades we have taken. But this is only showing now one trade, and when it is went into the loss, rest of the trades it has not allowed us to take. So it is adding, so some rectangle might be. Do you okay, just share your response on chat. When you are opening this link, can you see rectangles in your screen? Are they visible to you, or they are not visible? They are visible. Okay, then it is also fine. Then that also gives you a impression that in this patch, if any plus or minus entry is coming, or any upside downside entry is coming, I have already graded out. That means you need not to take anything. We are not going to buy or sell on those. Not visible. Okay, I'll check where when it is not visible, and because in one of my browser it is not showing, but I think in on some of the browsers it is showing. So we'll need to check. But there is no need. If you can see the gray, this gray entry and exits, that is fine. So now we have improved Pearl Mind 4.0. What is that improvement? Are we going to get all the positive trades? Answer is no. ऐसा कोई टूल बना नहीं है मार्केट में जिसमें you are only going to get positive trades. But what we did with the chart using Pearl Mind 4.0. So let's start with the complex day, 11th. So 11th, suppose now I am explaining the rules for executing trade. Okay, I'm keeping everyone on mute. Whatever you want to say, please say in chat. I'll check. Okay, now see. So suppose it has shown you an entry for downside, and we are suppose buying P over here, and then market started going against you, and at this point you got dark green. So that means we need to take a exit from P by booking a loss of approximately 180 points on spot. That means, just a moment, ये क्या हो रहा है, चार्ट जूम करना था मुझे. हाँ, that means on in your trade it is approximately 90 points or approximately 100 points loss. So we booked 100-point loss, but it is dark green. So that means we are switching from P to C. So we are closing C. You can close after closing this candle or at this point as well. Whatever you feel comfortable. Those who want to close at the point, they can close it. Okay. Then we are entering into C, and then C went up and again started falling down. So this is again went against us. But this time you have lost 180 points, 18 points on spot. That means half of this
premium, half of this in your option. Whatever option you have taken against 118 points, you might have lost another this 55 points, 50 to 60 points. Then you got light. So you exited at light trade, but light trade is not an immediate entry. You are not going to enter in P. So for dark green entry, light trade is an exit where we are not sure about next trade, whether market will go down or will move up. But we need to take an exit with control loss. So that's the reason it is marked in light in color. But then once that phase got over, we got re-entry in P. This time you are going to take entry in P, and suppose it went down, 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 down. It went up to certain points and took reversal, and at this point it has taken a reversal. So that means from this point till this point only 58 points positive. So it went more down. So that's the reason we got at least 15 points positive on spot. That means in your option you might be getting around 25 to 30 points in profit. But again, this is light green. Light green is not an new entry. That means you are not sure, we are not sure market will be moving up from here or it is going somewhere else from here. That's the reason we are not going to enter in this. But then we got an entry late. Okay, that late we got an entry because it is a dark green. At this point we are again going to get into the chart, sorry, into the trade for CE side, ATMC, and then we are waiting, and at 63 plus 63 points we got light red. So this light red is nothing but we are getting exits of the uptrends or up moves or upside trades within indecisive area. If it is within indecisive area, it will be light red always. Then we again go for C, and again it has given us a loss, right? So this loss is minus 144. So that means again 70 points loss. So that means if you are trading for 11th, you lost 90, again 60, and then 70. So around 240. You lost 240 points, right? And at the same time you got only 25 and 30, so around 55. So 240 minus 55, you have lost around 180 points, and then you got a trade PE side, and this trade might have given you, so until that day when you kept open, it might have given you 250 points. That means on in your option around 150 points. So that means 250, that means 125 points. So that means your 190 minus 125, approximately 60 points you are down, still 60 points down. But then carrying forward this trade for the next day, you can do two things. One is either if P is active, you can buy C ATMC. You can buy ATMC. If P is there, you can buy ATMC and carry both the positions. Or if you do not have enough fund, then you should take exit from P at this point, around 327, 328, whatever. This is not the marking. Around after 25 to 30, within this 3-4 candle, you should take an exit if you don't have enough money to carry two positions. Next day when market open red, after looking at red color, you can continue your trade on PE side. So that means you should buy ATM PE on this point, at this point. Okay. And then when you got this, that point you should take an exit from PE. Okay. And when the signal is green, dark green, immediately after exiting P, you should exit in C. And then again for C, you got
78. What is this? Minus 78. So in this move, you may got, if you're carrying forward for next day, it will definitely bring back you to zero. If you're opening new position on next day, then your minus whatever what was your loss around minus 90 80 points, that is still continue, and you have entered in this minus 78. That means from minus 90 you went from minus 90 to another 30, so that means minus 120 points, and then you need to exit at this, you need to enter at this, and you got another 146 points on spot. That means another 70 points in your options. And so you entered at this point, exit at this. So whenever there is light green, that means you have to exit, but you need not to enter new CE, because we are in uncertain area and we don't know whether this CE will work or not. So again we got an PE and we are exiting at this, but we are not sure whether this CE is going to perform or not. Again we got P, exited. So you can see this continuous 3 trades are positive. So you might have got 17 points here, 40 points here, and another 60 points positive here. Here you got a negative trade and you have lost around 10 points. Again, here you got plus 90, that means plus 45 points in option. Here you have lost 63 minus 30. Again, you can see 185 points positive, that means plus 90 points in your option approximately. Again, from this point to this point, plus 191. That means another another 80 points positive. If you are suppose carrying P, where you are carrying P from this point, so that means you need to carry C as well by the end of this, or close this trade at this point around 325. After 325 you need to close this. If you want to carry both, then PEC you would have carried and you have got some good profit in C, but your entry and exit of P is approximately same. So that means P might have this entire profit might have killed, but you got good profit in at least this 191 points in C. Likewise. Then next trade we got 396. That means you got around 200 points in your trade. So see what we have done with Pearl Mine 4.0. Whenever we are booking losses, it will be within 100 points for that one single lot, right? And whenever we are booking profit, it can extend beyond 100, 200, whatever. So imagine you got next trade, you got C at this point, 800, and for 837 points, it has not given us an exit. So that means 400 plus 410 points you got in one single trade, which might have covered all your losses you might have done in your past trades. Again, this is a complicated area, right? First loss minus 18 means minus 9, minus 178 means again minus 60 to 70 points. Again minus 15 points, minus 60 to 70, minus 15. So still it look complicated, but we have you can see we have skipped this trade, we have skipped this trade, so the number is reduced and the loss is also reduced. Then 94, and again we got a good entry, and this good entry has given around 1000 points. That means you have got another 500 points in this trade. Again we got next positive trade where you might get another 65 points. Here another 17 sorry, 18, 85 points. Minus 56 means minus 30, 40 points. Again minus 60 points. And these many trades were there. We have lost around 200 points in this trade, 200 to 400 points, but these are now removed. So next time if this kind of patch is coming, you are not going to enter multiple times. And then we got an entry for downside, which is minus 320. That means minus 160 points. Then another negative trade, minus 50. So that means why I am showing you this, positive and negative trades are randomly distributed, what Mark Douglas is saying. But what Jesse Livermore is saying, whenever you are sitting on positive trade, you should catch the entire trend. That is what is done with this Pearl Mine 4.0.
And whenever we are in loss making side, this tools guarantees you that you are not going to lose more than 90 to 100 points in that trade. And that says you will be amazed by watching the result if you get a positive trade in the right manner. If you are not making any manual mistake, this is basically meant for full automations, but currently we are using for this to identify if there are any errors. And last time, if when I given this to community shared there is a choppy market and we may lose some good amount of money. And this time we have come up with the solution for that, and we have reduced all those trades, and the results are drastically improved. You can see the results in a week. You could have get a chance to catch 3000 plus points on a spot. That means at least 1500 points in this at least 1500 points in options, right? And this is also like Pearl Mine 4.0 is also chargeable, and those who are already using 2.0 3.0, as I mentioned. So we are just looking for, so we are doing this in Bank Nifty. Suppose 40 points is a stop loss, which I am imagining. If you are losing any trade with 40 points, that could bring you a loss of minus 1400. If you are ready to pay this as an subscription fee per month, you are going to get number of trades, positive and negative, for entire month. And the potential of negative trade would be maximum minus 90 to minus 100 points, max to max minus 100 points. And for positive trade, max or min to max, it is like here in this case, min to max is what? 0 to 100. Min to max, if you are making any loss, it will be within 0 to 100 points. And in this min to max, 0 to plus 500 plus 700, anything which is as per trend's capacity, right? So that's the biggest difference between 2.0, 3.0 and 4.0. So 2.0 was only enabling us to catch 40 points plus or minus, and it is meant to practice this. So before testing the actual turbulence, I have not seen yet chat. Give me some time. Plus 40 to minus 40. 3.0 was re-entry. What 3.0 enabled? Re-entry in missing trade. But it's difficult to handle in losses. Now 4.0 is made it is trend follower. The moment trend is lost, it books minimum loss. But if trend is there, it catches, it eats entire trend. That is the major difference between 4.0. And you need to test this. So we still have time. Next week we are still left with where you can utilize this, try to understand this, check your trades. I'll just look into the chat. Someone is saying something. Sorry, what is Pearl Mine 4.0? Algo trading. Yes, it is an algo which I have developed based on two lines theory. It has all the understanding, all my brain, or it has all two lines brain running behind this. If you want to look at the all the brain, let me just show you
how and what is it calculating? It is calculating distance from low to the next low, high to the next high, then their deltas. Lot of things are there. I'll just show you how many calculations are there. Oh, but mm, let me show you some limited, because then I need to hide them again, and it will be difficult for me. Whatever I know, I'll just bring additional important maths. See, so this calculates many things, and it also identifies when the price is getting. So this looks very messy to you, and that's the reason we have kept I have kept everything hidden. Just a moment. Sir, if trade closed at the end of the day, next day morning, if the previous PE continues, can we reinitiate new? No, if P and C you are carrying, whichever side market opens, the candle color is suppose red, then you need to exit C. That's all. Why we are carrying C and P? Just to absorb the gaps up and gap downs. Right? The moment next day opens, candle color is green. We need not to open new trade. We just need to close one of the trade from existing one. If candle color is red, then you should keep P active, close C. No, suppose I did not carry forward. If you are not carry forwarding and next day opens, depending on candle color, you can directly start entering. You can enter into the market. It is hardly 90 points risk if you are on wrong side. But you will at least continue. You can catch the continuation of the trend. Okay. So these many things are there. What it calculates, if you look into this closely, it calculates every delta, everything here. There are some additional calculation, like this is from trend to trend. This is from previous low to next low. It has went more down. This has not, like suppose this is 178 points down. After that, this is 237 points down. So this is lower low. So if lower low is made, if higher low is made, how it is going to change the next line of action? It gives us an confidence. Market will go more up. Then this block is formed. Everything is formed. But for execution point of view, we are not showing or keeping everything is visible to you, as it is going to confuse you more. So better I am removing what is not needed, and whatever we are left with it is enough for trading. Whenever you see or experience these boxes, that means you should be very casual, because uh, option sellers, okay, market is aligned for option sellers after experiencing these boxes. And these boxes, after these boxes, if you stop yourself when you see these boxes, you may save this trade as well, and then the actual move is going to happen. This is to create an consolidation. So if you avoid this trade, that is also good, right? And then the actual moves are happening in the market. So for, if you want to execute this, I'll say keep taking every trade, because this algo is aligned in such a way that it will have more positive trade than the negative trade. And if you're catching more negative trades, the number is also now toned down. In choppy market, we have reduced around 70% of the negative trade, and we need to only catch at least 3 trades. After that, market is choppy, is understood by the algo. At least 3 trades we need to close negative. Okay. So I have also explained Pearl Mind 4.0 and the execution rules. You need to just go through this and start applying the rules. Okay. And the batch, like the theory batch of Black Pearl 14, 16 will be starting
in next month now, not in this next week. But I think with the help of Pearl Mind 4.0, just imagine if you get a chance to catch 1500, forget about 1500, half of this. So this is an half calculation. This is the total you could have caught in last week. So what I was saying, if you are ready to pay this plus GST and platform fee, platform is Razor Pay platform fee. This comes around 14,061 something rupees. I have not calculated this recently, but if this is monthly subscription cost, against that, if suppose you have got around 1500 points, how much is this? If you could catch all the trades, this would have been 45,000. Okay, forget about all 750. So this is 22,000. Forget about 750. If you could catch minimum 120, that is what I do claim, minimum 120 per week. This is per week I am saying. This was a week, within a week, because market was trending. This is not showing the exact number of month, because this is free tool, this is TradingView is free tool, and it is not able to go back to the previous months. It is only covering certain distance. If you look into this, see, this is only covering up to May. Even it is not going beyond May, because I have added multiple labels. It is only giving me access to till 4th of May. So since 4th of May till today, 2500 points in options you could have made. Okay. So that means minimum 120 per week. In 4 weeks, our target is to catch approximately 480 with 30 lot size. So that means in a capital of, and you need to put a capital of 1 lakh in your pocket. 14,400 rupees you are going to get, or you minimum 14,000. So currently I have kept fees so minimum. With one lot I have kept only 1461, and you are getting suppose 10 times of that fees. So it should be a deal for you. Like in first 1 month, you can get an subscription cost of next 10 months. That is what I see, because I have also gone through same journey. And what if it is affordable to retailer, then and only then retailer can try and test their actions, their confidence, they can build their conviction. That is what I have learned over the period, and that is how I have built this. So imagine, on if you can keep 1 lakh in your pocket, you have a potential of minimum 14,400 rupees per month. Even worst of this can happen. It is like, forget about 10%. Even if it is uh, like, if it is not 480 points, only suppose only 40 points per week, that means 200 points, only 200, that means 6,000 rupees. So this 6,000 is nothing but, if we calculate the percentage, this into 100 divided by this, क्या हो रहा है 6%. Okay, I am saying 480 points, then it is 14%. Just imagine 1500 points.
It is coming around 45%. It looks like impossible, but you need to do it and check it, because this is the closest trend follower algo which we have enabled by putting lot of efforts. And those who are watching this video and those who want to understand it further, you can join this Black Pearl 16, and at end of this Black Pearl 16 I am going to explain uh, benefit of this algo and how we can execute this. And along with that, in that batch, you are going to get that subscription as well for testing. Okay. Okay, so I am done. Now the forum is open for queries. Please, thank you so much for your patience in listening, and thank you for not disturbing in the middle. बोलिए अभी किसी को कुछ क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, एनीथिंग? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी कोई बोल नहीं रहा है? सर ओके, मैं नींद में चली गई थी। ओके, आज टू आज टू वे नहीं था ना, इसीलिए। ओके। तो सब अभी 80 फीट चला गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हाँ, है। ठीक है। सर्वानंद, सी, it is already enabled for 1 minute, 3 minute, 5 minute, but I have tested 3 minute as well, and it is killing the potential of initial 10 to 30 points. And now what I did, it looks like we are executing it on 1 minute, but I have configured this tool to follow 3 minutes, but we are executing on 1 minute time frame. Okay, that means all the rules are followed from 3 minutes. I have bought all the rules from 3 minutes time frame. Only thing is where we were losing in that for 3 minutes closing, we were losing initially via impulse or something. That can be handled by using 1 minute time frame. Otherwise, it is not based on 1 minute time frame where you will get hell lot of entries. It is not based on that. All the rules are based on majorly 3 minutes time frame and 5 minute time frame rules. Okay, so the perception which is coming to your mind is because the noise, you that noise is removed in this version now. In this Pearl Mind 4.0, after this upgrade, after last week, these multiple unwanted entries, like after this buy, this sale has happened, next buy we have removed if it is not falling as per 3 minutes rule. That is what we have removed. And as I said, there will be still negative trades because they are crossing certain limits. And if we cannot keep every number as an limit, we just need certain level as an limit. Anything falls under that limit, we need to ignore those trades. And anything is crossing, we have to take this trade, because there will be some trades which are going to kill your profit. Not every trade is going to give us profit. That is what my understanding is. Okay. Thank you, Akshada. यस यस, थैंक यू मिनी जी एज वेल। वो क्वेरीज बीच में आ जाते हैं ना, तो अभी आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग दिस वीडियो विद द न्यू जॉइनर्स ना। दे आर हाईली डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द डिस्कशंस, and they are losing the track. That's the reason I thought we should discuss this topic first and bring the queries towards the end of the session. Even it is easy for you to even revisit, because then we are not losing the track. So thank you for your immediate feedback. Yes. So now when I'm asking for queries, there are no queries. So that means the outcome, total outcome is good. Like everything is cleared now. So abhi Monday say you will start printing money, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Two questions. Say, Hmm. first question is, you said that right now you have tested the system for performance, Hmm. and it seems to be working best for 3 minute time frame. Yes. And have you also tried higher time frame like 5 minutes or 15 minutes if the performance improves?
It is there, but again, the as per 5 minutes numbers and 15 minutes numbers, the best entry we are getting around in within 1 minute or 3 minutes. If we are configuring those parameters, we are bringing parameters of higher time frame into lower time frame, then and only then it is possible. But if we are utilizing same parameters, then we are going to lose the major chunk of the market, just because of the reversals are happening during the trend. The entries are getting at the wrong points. Like if I show you, if it is on 5 minutes, see, just a moment, sir. Just thank you for your patience, sir. Yes. So this is 5 minutes result, and these are the entries and exits. And you can see the numbers are increased now, right? Okay. Yeah. So it is working fine. But whenever we are working on higher time frames, the stop loss is high. And if we need to manage those stop loss, then we need an additional profit, because working on capital is impossible. Like I think Ajay sir, I am listening your name for the first time. So that means you are very new to two lines theory. Is it the right understanding? Yes, that's correct. Okay. You got this got this sessions details from whom? Is it from internet or from someone? From your group, Okay. your Twitter profile. Twitter profile. Yes, fine. Then fine. No problem. I understood. Yeah. So see, this two lines theory has we have a framework based on which we have developed this algo, and this is completely based on FII's investment pattern, and it took around 7 years to bring the clarity to this level. So that means slowly, gradually, when you understand the logic behind this, you will get an confidence on these numbers, like how the market is moving in this way, why exactly at this point market is taking halts, why exactly this point it is changing the trend. This is what you're going to observe. But meanwhile, you also need to test this, right? And that's the reason I'm asking people to test with minimum 1 lakh of capital, where we are going to take a trade of approximately 700 to 800 premium. We don't work with weekly expiries. We do trade with monthly expiries, and with the premium of around 700 to 800 points. And in that 700 to 800 premium, we either lose 80 to 90 points, or we gain more than 80 to 90 points in single trade. And that is how we try to learn surviving first. The moment capital goes or profit goes beyond certain region, certain limit, then we switch to second lot. I'll also share that once I get some time, and after these queries, I'll share that Excel, how we are thinking about scaling and compounding this machine. And this is we are going to deploy in full automations. Okay. So when we will be doing full automations, then you just need to configure or tune your this broker account, and it is going to shoot the trade. What will be the major difference between this and manual automation? Normally, a trader is scared of executing trades on their own capital. So this machine is going to create that buffer in your pocket, which you can utilize for understanding your trading style by deploying this profit in the trades which you like to execute.
and you're getting scared because of lack of money, if there is lack of money. If you have full confidence, then you can just copy this trade on your own account manually, and you can also uh, change, like you can also improve your skill. I'm not saying improving the skill, you can build more conviction in the trades. Right. And right now, this is configured only for Bank Nifty. This is also configured for Nifty, but as I said, majorly I'm training on Bank Nifty, and then you can switch. So we have also Nifty 2.0, Bank Nifty 4.0 is also there. Okay. Yeah. And also, if the volatility changes, Mm-hmm. then the parameters may also change. Were not up as per volatility, but when market fall will happen, next fall will happen, we will get to know the parameters, and we are going to configure those parameters. And it is like, if we are getting this parameter in this year, it will run for another 4 to 5 years. Same parameters will be okay. Like these parameters we got in 2020, and we are sitting in 2026. It is exactly running like same. Okay. 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 Yeah. Yes. Thank you. Anything else from anyone? So the document that you mentioned, it explains the rules of entry and exit for this particular system. Mm-hmm. You Okay. you will be, yeah, you will be getting a similar document. I'll just show you. Okay. The Pearl Mind rule book. See, likewise, you are going to get the document, or this is there are all the rules: entry principles, exit principles, position sizing, how you are going to initiate the trade, how you are going to close the trade. This is for 2.0, but you are going to get for 4.0. And if you go into if you want to check the performance of our last, like 2.0 started in October, and this is some of the performances where you can see plus 40, minus 40 trades. Okay, to look at the result of all the actions which are done with two lines theory on 2.0, there is one link. This is one proof. Okay, this will not open on this laptop, but one moment. This will open in your mobile. If you check this will not open on the laptop, but this is a performance result for the Pearl Mind 2.0 Express Tree. This one. Just a moment. Likewise, like this page will open where you can see at the center, these are the results. Like we were catching with 2.0, we were catching only 40 points, but market was moving for 639 points. So after understanding the actions of the traders, I have configured this so that now if 600 points move is happening, we can catch entire move. 211 on October 3rd, then on October 6th, 290 points move. Likewise, every day these moves are happening, and this was the 2.0 version where you can see all the results. And there are also some participants, they have shared how many points they have got in that duration, their monthly profits and losses. You can see this is entire month. Never in his life he might have seen this green. This every day they are taking trades and still trading in Bank Nifty and green. This is realized 7,000 profit, and you can see with one lot, as we said, catching 40 points is approximately 1400 because the lot size was 35 that time. Likewise, you can see different results over there. So this method is no new, might be new to you, and the claims might be like, it looks like imaginary claims. But as I said, the next move is going to happen like this, and we can closely watch the market. What will happen at 55,000? What will happen at 51,000, 55,300, and then 48? Is this algo works only on trading view? Can we use this in our platform?
So Sham, sir, this you can use because this will be fully automatic and will bring I'll bring this algo to execute trades on your broker, but not via trading platform. So we are creating one tool in between. That tool is going to shoot the trade, and those trade will directly happen in the background in your trading account. So the access so this algo will not be shared, but the actions from the algo will be shared with your trading platform through API. Can I connect with you sometime next week, Anish ji? Yes, you can call me. Blue box has any ranges? It is like 292 or anything between 292 and 1%. Akshata. ठीक है? Any other queries? सर मैं एक आपको एक व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा है सर मेरे को एक्चुअल में लास्ट वीक आई हैड बीन मतलब मेरा कैपिटल हाफ मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाता जो आपने एग्जैक्ट मतलब सबको अपन सबको तो सर कुछ बोलना चाहता हूँ अगर आपकी कुछ परमिशन वगैरह हो तो भेज दो ना सर, आपको लग रहा है भेज तो। दिया सर मैंने वो सर और कंपाउंडिंग का वो चार्ट भी भेजा है सर ओके, सर व्हाट्सएप पे भेजा है एक्चुअल में इसके लिए ठीक है। अपने कौन से दैट वाज एक वीडियो है कौन तो से सर वो ग्रुप में भेजा? मैंने थोड़ा उसको देखा था ना तो हम्म। सर ये और कुछ लिखा भी है आपके लिए सर पहली बार ट्राई किया है सर ओके। आपके लिए कुछ 4 लाइन्स बोलना चाहता हूँ जो 2 लाइन्स ग्रुप के पायरेट मेंबर्स को के पैसे को अपना पैसा समझ के बचाना चाहे उससे कहते हैं मेरे गुरु संजय सर जो रात के एक्चुअल में वो जो वीडियो अगर आप प्ले करेंगे सर मेंबर्स आप एक देख सकते हो रात के 2 बजे 2 o'clock से सर है ना स्टार्ट हुए थे आई थिंक सो मैसेज करना जब तक अपन के पी को सी में कन्वर्ट नहीं करा है ना जब तक सर ने मैसेज स्टॉप नहीं किए आई थिंक सो तो रात के 2 बजे से मैसेज स्टार्ट करके सुबह से जब तक पी को एग्जिट नहीं करे तब तक सर ने मैसेज करना स्टॉप नहीं किया उसे कहते हैं गुरु संजय सर खुद की नींद खराब करके पायरेट मेंबर्स के पैसे को बचाते हैं उसे कहते हैं गुरु संजय सर थैंक यू सर लास्ट वीक के लिए बहुत बड़ा थैंक यू सर अगर वो वाइप आउट हो जाता सर बहुत मतलब अमाउंट बहुत मायने रखता था सर मेरे को ये इसके लिए सर थैंक यू सर, टेंशन नहीं है। ये सब यस सर अपने को कोई ना कोई तो बता रहा नहीं है सर अपने को, और हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस सर वो एग्जैक्ट जबकि आपने बोला एग्जिट करने का एग्जैक्ट एग्जिट किया और एग्जैक्ट वो रिवर्स मारा सर बरोबर बरोबर बोले तो बरोबर बहुत वो उस दिन लगभग ऑलमोस्ट सब जने अपने पायरेट मेंबर ग्रुप में बहुत आश्चर्य हो गए थे और कमेंडेबल था सर सच्ची में बहुत कमेंडेबल था मतलब एक मैजिक था मतलब कि एक मैजिक टाइप का मैजिक हो गया था सर सही है। मैंने जो वीडियो डाला है ना उसमें मैंने सबकी मतलब डेट के ऊपर सर्कल्स करके एक वीडियो बना के डाला है सर मैंने ग्रुप में नहीं मतलब अपने आपको प्राइवेटली भेजा है सर ओके, तो देख रहा भी हूँ। थैंक यू सो मच सर वो मतलब वर्डिंग्स में थोड़ा उधर उधर चूक हुई होगी सर वर्डिंग्स में मत जाइएगा बस फीलिंग्स में जाइएगा सर थैंक यू सो मच सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर और सर अलगो में 100% आई विल ज्वाइन सर 100% श्योर सर थैंक यू मुझे थैंक लेना है यू थैंक यू सर कीर्ति जी, आप मतलब आप जो बोल रहे हो वो मुझे अच्छा ही लग रहा है सुन के। थोड़ा सा मैं यस सर ये मतलब सुनने में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, बट यस सर गुड सर गुड मैं टू भी हो गया था नो। सर आपने वो जो करवाया था ना उस दिन मैं रो गया था सर ओके। सच्ची में मैं रो गया था इसके लिए मेरे को आज उसको मैंने सोचा था कि बोलूं नहीं बोलूं मैं क्या आज हिम्मत कर देता एक बार बोल देता और लिख के लेके आया था और क्यों मेरे को बरोबर होता नहीं है बोलने का इसीलिए मेरे को ये सब मेरे को ज्यादातर ऊपर से जाता है सर ये बॉक्स वगैरह सब मेरे को नहीं पता चलता है बट ऑल दो सर मेरे को थोड़ा बहुत जैसा आता है थोड़ा मैं बैठता हूँ बैठ करके थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ बट वो जो देखा ना उस दिन तो मतलब एक मैजिक था सर ऐसे मतलब शिफ्ट करना फटाफट फटाफट होना और एग्जैक्ट होना और इतना पॉइंट टूटना बहुत मैजिक था मेरे लिए तो इट वॉज एन बहुत मतलब ये दिन यादगार था इसके लिए मेरे को और यादगार बनाने के लिए ये लिखा था सर मैंने आपके लिए थैंक यू सर। और अभी आप थैंक यू वेरी मच सर कितने पॉइंट्स आए रहेंगे आपको अभी लास्ट? सर मैंने खाली एक ही दिन मैंने 100 पॉइंट्स लॉस किया था
और उसी दिन मतलब और मैंने और एक लॉस किया था, बट आई कैरी फॉरवर्ड, तो वो कैरी फॉरवर्ड किया तो वो अगले दिन में मेरा दोनों कवर हो गया। सो लगभग समझो ना सर, ये मेरा ये महीने का मतलब आई हैड कलेक्टेड लगभग 1000 से ऊपर पॉइंट्स है सर मेरे पास। क्या तो बात। मैंने एक्चुअली एंट्री नहीं किया, मेरे घर में अकेला हूँ मैं, सिंगल, मेरे वाइफ सब वेकेशन पे गए हुए हैं ना। सो घर का भी और दुकान का भी दोनों का करना करके इसके लिए नहीं हो रहा है, तो लिखा नहीं है मैंने। फर्स्ट डे मैंने कलेक्टेड वेरी गुड पॉइंट्स, सेकेंड डे आई हैड लॉस्ट 100 पॉइंट्स, थर्ड और फोर्थ डे फिफ्थ डे मैंने नहीं लिखा है, तो मैं लिख करके आपको मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ सर। यस यस। और बट दिस वीक वेंट वेरी गुड सर बिकॉज ऑफ यू सर। बिकॉज ऑफ मार्केट। नो सर, मार्केट तो सर आप हो तो मार्केट है सर मेरे लिए, तो मेरे लिए सर देखो सर, बहुत लोग सब होशियार है, बट मेरे लिए तो आप हो तो मार्केट है। इधर आई कैन कैच ओनली 40 एंड -40 सर, मेरे लिए तो 2 पॉइंट ही है सर। ओके। नहीं नहीं, सुन के अच्छा लगा, अच्छा लगा कि यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट। और यस सर, सिर्फ अपने को थोड़ा सा और लर्निंग करना है सर, बाकी कुछ नहीं यस है। सर, लर्निंग का मतलब जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इतना टाइम डाला, और मार्केट अभी यस अपने सर। साथ बात करता है। जो मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट सच्ची में बात करता है, और शायद ओके वो ओके टाइम आ गया है कि मार्केट अपने को एडवांस में भी बताना शुरू कर सकता है या कर रहा है, जहां जहां जरूरत है। जैसे कि उस दिन ओके आप ओके। जो बोल रहे हो ना, दिस इज दिस पॉइंट। और अभी लिटरली मतलब मैं ये बोलूंगा कि क्यों वो पॉइंट ट्रिगर किया, बिकॉज वी हैव सम पायरेट्स, जैसे मैं बोलूंगा किट्टू जी है, अपर्णा मैडम है, दे वेर शेयरिंग हाँ टू सम आपने, मार्केट। हाँ आपने बोला कि किट्टू मैम और अपर्णा मैम ने कुछ बोला था, तो आपने उसको रिकंसिडर किया और आपने हाँ कुछ ढूंढा और मिला करके। यस यस। यस, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर प्राइस में स्ट्रेस दिख रहा है, इसका मतलब दे यस यस। एक्सपीरियंसिंग समथिंग। और उनको भी अभी दो तो दो साल से ज्यादा हो गए हैं ना, तो उनको भी यस वो यस, समझ में थैंक आ यू। रहा है। बिहाफ में थैंक यू भी किट्टू मैम और अपर्णा मैम को भी थैंक यू सो मच। नहीं सच्ची में, और वो देखने के नहीं लिए। कीर्ति सर, इसका क्रेडिट ना टोटली सर को जाता है, नहीं वो तो क्योंकि सर, तो ये सर तो देखने गुरु है में सर हमारे, गुरु एकदम। देखने में और उन डॉट्स को कनेक्ट करने में ना बहुत डिफरेंस होता है। यस यस यस। तो इसका फुल क्रेडिट सर को जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। यस यस सर यस। मुझे बीच में यूं ही फंसा रहे हैं। नहीं सर का, देखो मैं आपको, देखो आपको ऐसे नहीं बोलूंगा, सर का बड़प्पन देखो। सर ने मेरे को जोर का वो मैसेज भी देखा ना मैंने, तो मेरे को मतलब मैं तो आंखें में से पानी तो आ रहा था, और ज्यादा आने लग गया कि सर ने मतलब इतना सब कुछ करके भी तो भी है ना, वो कुछ बोलते हैं कि किट्टू मैम और अपर्णा मैम करके बोले ना, वो तो मेरे को बहुत मतलब और भी प्राउड फील करने लगा कि आई एम ए नहीं वेरी लकी गाय टू हैव ए सब सच गुरु मेरे साथ है करके। तुम नहीं लोग सर, इमोशनल इसमें हो कोई रहे हो, डाउट रुको नहीं है। रुको। संजय सर जैसा शायद ही मुझे या शायद हमारी एंटायर ग्रुप को कोई मेंटोर मिले अरे तुम लोग या रियल फिर इमोशनल मिला में हो रहे होगा। हो। सर। रुको रुको, तुम लोग इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करना सर, हम पड़ेगा। रो नहीं रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज मैंने फाइंड आउट किया, वही पॉइंट हम्म, 19 वाला। अगर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके तो बेटर होगा, क्योंकि वो वैलिड है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो करता है ऐसी चीजें, मतलब 5 मिनट पे 3 मिनट पे ना, हम्म। वो चीज काम कर रही है। पॉइंट पॉइंट 19 पे भी मैं आता हूँ अभी। जैसे मैंने आपका प्रीवियस क्वेरी का आंसर का लॉजिक ढूंढना चाहा ना, जिसमें अपने को ये हाँ मिला, वैसे पॉइंट हाँ। 19 भी आई एम टेस्टिंग, गिव मी सम मोर टाइम सो दैट आई विल ओके। बिल्ड सम अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। क्योंकि शायद आपको भी पता है, जब तक मेरे को वो हाँ कॉन्क्रीट हाँ, नहीं चलेगा मिलता चलेगा। है, मैं हाँ हाँ, बात मुझे नहीं कर पाता मुझे हूँ। कोई, हाँ हाँ, हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म बट क्या होता है ना, मैंने ऐसा टेस्ट किया है कि हम्म जब भी उसने पॉइंट 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, बस 1 मिनट, हम्म मैंने कैसे इसको सोचा है कि सपोज दैट, एक मिनट में पेन से लिखती हूँ डिफरेंट कलर। यस, अभी जैसे 1 मिनट, जैसे मैंने बॉटम से लिया, हम्म। ये ब्लू वाले बॉक्स को सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, नीचे वाले। जूम इन। 20 तारीख को यस, जूम आउट। हाँ, जैसे सपोज दैट अभी मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 20 तारीख को, ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है ना, मुझे हम्म कुछ ही नहीं पता। तो अभी मुझे सिंपल मतलब 19 के थ्रू बता रही हूँ, कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं बता रही हूँ। हम्म मैंने सिंपल क्या किया है कि एक 90.19 का डब्बा लेके डाला है, ठीक है।
फिर मैंने वो चीज को टेस्ट किया कि या क्या ये 100 का होगा सर, वो 101 का होगा। इधर हाँ हाँ, ऐसा पकड़ इधर लो, 0.19 अप्रोक्सीमेट 99 का आ रहा है। है ना। 100 का है। तो फिर हाँ, अगर मुझे 3 मिनट पे नॉइज मिलता है तो मैं इमिडिएटली 5 मिनट पे स्विच कर जाती हूँ। हम्म तो अगर मैं वहां पर टेस्ट करती हूँ क्या ये बॉडी टू बॉडी नीचे की साइड क्रॉस किया क्या, हम्म अगर वो नहीं करता और सम हाउ मेरे को ऐसा टाइप का कुछ मिल जाता है कैंडल, इस हम्म टाइप का, तो हम्म मैं क्या करती हूँ एक छोटा सा एसएल लेकर, हम्म मतलब 3 मिनट की एक कैंडल अगर इसके नीचे कोई भी क्लोज होगी, हम्म देन आई विल एग्जिट। हम्म मुझे वेट नहीं करना है 0.33 तक लाने का, आई हम्म विल एग्जिट, है ना। हम्म अदरवाइज मैं क्या करती हूँ यहां से ट्रेड इनिशिएट करती हूँ फॉर हम्म द पॉइंट ऑफ 292। हम्म आप एक बार थोड़ा सा कीजिए इसको, मतलब रफली टाइप में, तो प्रॉपर काम कर रहा है ये। 1 मिनट रुको। दिस इज है ना। 0.19। हाँ, अभी अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है, किसी किसी को लगेगा अभी इस मुझ में, मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि ये 0.19 को तोड़ गया या कुछ हो गया, है ना। हम्म तो इमीजिएटली आई जस्ट स्विच इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, सो हम्म दैट मैं वहां टेस्ट करती हूँ क्या इसने ब्रेक किया है क्या नीचे, और ब्रेक करने का कौन सा तरीका है, इम्पल्स था या फिर स्लो स्लो करके था, किस हम्म तरीके से था। तो हम्म वहां पर मुझे देखिए जैसे इसने क्या किया, इधर आके इसने 0.19 को पहले ऊपर ब्रेक किया। हम्म जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो इसने मुझे श्योरिटी दे दी कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द गो 292, ठीक है। हम्म बट मैंने इसमें भाग के एंट्री नहीं ली, मैंने क्या किया, पुल बैक का वेट किया। हम्म मैंने यहाँ पर एंट्री ली, अगर किसी को नहीं भी है ना, यहाँ पर ले लो। सिंपल एक 3 मिनट का चार्ट लगाओ कि अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, आई विल एग्जिट, मुझे 0.33 का वेट ही नहीं करना है। हम्म और जब भी वो 0.19 ऊपर की साइड तोड़ता है तो वो 292 जाता ही है। हम्म ऐसा मेरा मतलब फाइंडिंग है। ओके। अभी ये इसको ही मैं, आप जो बोल रहे हो ना, हम्म। मैं टेस्ट अभी कर अभी ही रहा देखिए हूँ। सर, ऊपर से रिवर्स करिए, वाइसा वर्सा कीजिए। ये ये जब ऊपर से, हाँ 19 तोड़ा है इसने, देखिए आप, हम्म इसने 19 तोड़ा। अब इसके लिए हम्म ऊपर से टॉप से 292 रख दीजिए आप, वो जाता ही जाता है। हम्म इवन जो उस दिन वाली ट्रेड थी ना, तो मैंने वो वाली ट्रेड शायद यहाँ पर कहीं ली हुई है, जब मेरी आपसे बात हो रही थी, वो हम्म ट्रेड मैंने यहाँ पर इनिशिएट कर दी थी, हम्म। और ये गया है पूरा। 292। हाँ, क्योंकि जब फोन पे हमारी बात हुई थी तो मैंने बोला भी था कि अगर ये यहाँ पर आता है 0.19 की बाउंड्री पे, तो हम्म मेरा एसएल सिर्फ ये रहेगा, ओनली 40 पॉइंट का, हम्म देन आई विल राइड, काइंड ऑफ हम्म करके। हम्म तो ये मैंने मतलब काफी टाइम देख लिया ये 0.19 का। इवन 15 मिनट में भी अगर इसको हॉल्ट लेना हो रहा है ना सर, तो ये 15 मिनट में भी सेम काम कर रहा है, बस मुझे डॉट्स कनेक्ट करना नहीं आ रहा। आ जाएगा वो। वही मैं भी चेक कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे मुझे भी मैं 0.19 पे देख ही रहा हूँ। 0.19 का रिवर्स लॉजिक और फॉरवर्ड लॉजिक अभी तक मुझे सेट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो किसी को लॉजिकली बताना है तो मुझे वो चाहिए हाँ कॉन्फिडेंस। नहीं, वो समझ आया, बट वैसे टेस्टिंग पर्पज से मैंने उसको काफी बार देखा और ट्रेड भी लिया है, तो वो गया है, मतलब उस तरीके से काम किया है। ओके। अभी समझो जैसे कि ये केस में हाँ ये 0.19 ब्रेक हो गया। हाँ,
तो आप पॉइंट ट्रेड कहाँ 19 पे ब्रेक हो लोगे? गया, हाँ सुनिए सुनिए। अभी इसने ये पॉइंट 19 ब्रेक कर दिया, तो हम्म। फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने मुझे बोल दिया नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द गो 292 पॉइंट। हम्म। ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं करना। अभी इस कैंडल का क्लोज तो हो गया, अभी हम्म। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इमीजिएट नहीं लूंगी। मैं एटलीस्ट पॉइंट 11 के नीचे आने का वेट करूंगी। इधर से? हाँ इधर से। ये पॉइंट 19 पूरा भी आ सकता है और पॉइंट 11 से भी लौट सकता है। डिपेंड करता है उस समय मेरे आरएसआई फेवर में है या नहीं, या फिर जो मेरी सुपीरियर रेंज है वो उसके साथ अलाइन है या नहीं। RSI इधर ऑपोजिट में है। यस। तो समटाइम क्या करता है, मतलब इट इज टोटली बेस्ड ऑन ना एक्सपीरियंसिंग, मतलब वही मैं डेली। बोल रहा हूँ, हाँ इसी चीज को हाँ, मुझे लॉजिक तो में वो डालना चीज पड़ेगा। है। हम्म। यस। तो अभी इस केस में इसने क्या किया, पॉइंट 11 को भी ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स ये पॉइंट 19 का पूरा रिवर्सल लेने आएगा। हम्म। तो आइदर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पॉइंट 11 से ही बैठ जाऊं ट्रेड में, तो भी हम्म। कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में मेरा एसएल क्या होगा, इस बॉटम कैंडल का हम्म। नीचे कोई भी 3 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, आई विल एग्जिट। हम्म। क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मेरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं पूरे पुल बैक का वेट करूंगी। ये 123 पॉइंट का पुल बैक है, तो हाँ 60 पॉइंट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। हाँ। बट जब इसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो इसने क्लियरली बोल दिया मुझे कि मैं हम्म। जाऊंगा तो ऊपर ही। हम्म। तो मैक्सिमम इस केस में ये कितना ले सकता है, पॉइंट 19 का ही रिवर्सल ले सकता है। ओके, अभी यहाँ पे समझो मैं बोल रहा हूँ, हम्म। यहाँ से पॉइंट 19 पकड़ू या यहाँ से पकड़ू? कहाँ से? नहीं 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 नहीं, यहाँ से आप पकड़ोगे ही नहीं। यहाँ से जब तक वो डाउन ट्रेंड का 292 पूरा नहीं कर लेगा, जब तक यहाँ आपको से ट्रेड में नहीं टू घुसना। नाइन्टी यस टू इज यस दिस तो यस। ये 292 इज दिस। हम्म। अब इसके अभी आगे? अब हाँ, नहीं नहीं, अभी इसने एक और चीज कर दी इसमें। हम्म। मतलब वो ना चार्ट रीडिंग के साथ ही समझ में आएगा, इसने क्या किया यहाँ पर। हम्म। ये जब पॉइंट 19 काटा, तो हम्म। इसने एक और पॉइंट 19 का +1x -1x टाइप ऑफ दे दिया। तो ये सेम पॉइंट पेज इसने नाइनटीन यहाँ पर रिपीट किया, ये वाला। ये पॉइंट 19 का +1x यस दिस। यस। तो ये इस तरीके से 1x करके डाउन डाउन जाता जाएगा। और इसके साथ ना मुझे मेरे बड़े टाइम फ्रेम भी अलाइन करने पड़ेंगे। मतलब ये तो सिर्फ हो गया इंट्राडे का बात, मतलब जिसको मतलब 40 वाला ही ट्रेड करना है। हम्म। और अगर आप इसके साथ मतलब अपनी बड़ी, नेक्स्ट ट्रेड का बफर पैसा यहाँ से कमा सकते हैं हम लोग, हाँ मतलब और ऐसा आप किसको सोच ले सकते लें? हैं। क्योंकि अगर मैं होंगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगी, बिकॉज ऑफ इसने वही पैटर्न अप्लाई किया है जो यहाँ पर किया। हम्म। तो जब तक ये अपना ऐसा वाला पैटर्न निगेट नहीं कर देगा, आई विल नॉट एंटर फॉर द सीई साइड। हम्म। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा यहाँ पर कि यहीं रुकेगा। वो डिफरेंस है। अगर मुझे नहीं पता चला, पहली बात तो अगर आप रीडिंग करोगे डेली डेली तो आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ, है ना। हम्म। बट बीइंग एज अ फ्रेशर अगर नहीं पता चलता, तो जब इसने पॉइंट 19 ब्रेक करा, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये पॉइंट 19 दिए, इसमें आपके 40 बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। हम्म। आ सकते अगर 40 आपने तो मतलब हमारा, सॉरी, 40 आ सकते हैं। हाँ, तो फिर आप 40-40 का मूड है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज इसने इसका इस ट्रेड का रेप्लिका बनाया है यहाँ पर, ये ट्रेड का। हम्म। हाँ बट मुझे बस लॉजिक डालना नहीं आ रहा, बट मेरे को ये रन करना आता है। वो और करते हैं ना अपन। इसी को अगर आप 15 मिनट में डालेंगे ना, सेम सेम 15 मिनट को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। 15 मिनट्स में, लेकिन पॉइंट 19। हाँ देखिए ना, डालिए आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। 15 मिनट्स में पॉइंट 19 बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बट पता है बहुत सारी ट्रेड्स दे रहा है वो। जैसे पॉइंट 19,
ये देखिए यहाँ पर 0.19 है, B2B पूरा पूरा B2B 0.19 है। ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर ये पूरा 0.19 है, ये पूरा 0.19 है। इवन ये वाला पैच पूरा 0.19 है। ये वाला पैच नहीं है, सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला 0.19 है, ये वाला। ओके। यस, पूरा 0.9 है, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है ये इसमें रेस्पेक्ट इसलिए नहीं करा है, रेस्पेक्ट तो इसमें भी करा है, बट ये इसने यहाँ पर पीजेड बनाया था इसलिए रैंडम मूव दिए हैं। बट लिमिटेशन सभी सभी में इसने 0.19 का ही डाला है। हम्म इवन इवन ये वाला पैच 0.19 का है, ये वाला पैच ये ऊपर दब रहा है, यहाँ पर भी 0.19 है। हम्म। इसको तो चेक करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सर सब आप ही का दिया हुआ है नहीं ना मेरा विजय, कुछ नहीं है इसमें। हम जब बात करते थे ना कि हम कुछ ना कुछ खुद का भी निकाल लेंगे आगे जाके, हाँ, इवन वो इवन वाला देखिए चीज हो देखिए रहा है। देखिए देखिए, एक और चीज दिखाऊं मैं आपको, मेरे को एक और दिख गया अभी। पेन कहाँ गया? Shit. ये 0.19 है, ये 0.19 है। ये आप नहीं मार्क है। कर सकते हैं, ये 19 ही जाएगा वो ऑलमोस्ट। नहीं, ये ज्यादा है। ज्यादा है। हम्म। तो फिर ये होगा, मतलब इस पैच में भी मैंने बहुत सारे फाइंड आउट किए हैं 0.19, जैसे ये है 0.19। सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं। दिस इज 31, दिस इज 31। हाँ, आप वीक टू वीक मार्क कर रहे हैं, मैंने बॉडी टू बॉडी लिया है इसमें, हम्म 15 मिनट में। मतलब उसे कहने का मतलब ये है, अगर ये डाउन ट्रेंड में है, जाने चाह रहा है ना, हम्म तो ये सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लेता है 0.19 पे। अगर वहां पर आपको दिख रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ले रहा है, कुछ मत करो। अगर आप सुपीरियर बाउंड्री के पास हो और हम्म आपको वहां 19 पे स्ट्रगल मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, टॉप बाउंड्री के ऊपर माइंड में रख लीजिए या एसएल में डाल दीजिए कि अगर हम्म इसके ऊपर कोई कैंडल बना 3 मिनट का या 5 मिनट का, आई विल एग्जिट, सिंपल। और अगर बॉटम में सेम वाइस वर्सा सी में कोई मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है 19 पे आके, सिंपल एंटर इन अ ट्रेड, बस। नीचे या तो माइंड में रख के या फिर एसएल लगा के, मैं अभी एसएल लीव कर देती हूँ। समटाइम क्या कर रहा है ये, स्पाइक देकर जाता है एकदम, हम्म तो ऐसा भी है इसमें। जैसे इसने यहाँ पर ये वाली कैंडल में किया, जाना इसको नीचे था क्योंकि ये 0.19 ब्रेक कर चुका था, बट स्पाइस स्पाइक लेकर लोगों का एसएल लेकर फिर से भाई सब नीचे आ गए। ओके। बट इस केस में भी मेरा एसएल क्या होता, इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग आए तब। हम्म अंडरस्टूड। इससे मगर 40 पॉइंट बन जाएंगे, ये तो 40 बात पॉइंट्स पक्की है के फिर। लिए बेस्ट है। 40 पॉइंट्स के लिए हमें सिर्फ कन्विक्शन चाहिए, वो भी 200 पॉइंट का कन्विक्शन चाहिए। हाँ। और 19 के ब्रेक का मतलब 19 इज सपोज 100 पॉइंट्स, 0.19 इज सिंपल लॉजिक है। कोई भी हम्म ऐसा मेथड ढूंढो, समझो 0.19 इज 100 पॉइंट्स, तो 200 पॉइंट का रन आ रहा है, 200 0.90 के समझो 0.38 आ गया ना रन। तो हम्म। दिस इज 200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली, 200 में 40 पॉइंट कमाना तो बहुत इजी है। बहुत 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 हम्म बार मैंने देखा सर, मतलब लास्ट 2 या ढाई महीने से मैंने इसको देखा है, बल्कि हम्म ज्यादा ही हो गया होगा। सही है, इसको भी और देखा ही नहीं, मैंने ट्रेड लिए हैं। हम्म
इसको भी 2.0 में देख लेते, 2.0 में डायरेक्टली कैसे डाल सकते हैं। हम्म। हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ संजय सर, वो जो अभी तो मैडम बोल रही है ना, शायद वो हम्म 0.33 का 1/3 है। मतलब 57, क्या बोल हाँ सकते हैं, हाँ, काइंड मतलब ऑफ पॉइंट, बोल हाँ सकते हैं पॉइंट काइंड थ्री ऑफ। थ्री का 1/3 मतलब 57 आता है, और 57 का 1/3 19 आता है। ऐसा कुछ है हाँ, एकदम, मतलब नहीं माइक्रो वो लेवल वाइस पर। वर्सा है मैम, 0.19 एक्चुअली ना। अपना 101 होता है, वो 292 है, तो 1/3 सिंपल वैसे भी हो गया। हाँ वही 0.33 का ही वो कुछ दिख रहा है अभी। हाँ, बट वो वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ओके, इसको क्योंकि मैथ्स में पॉइंट डाल के नाइनटीन देखते ब्रेक करने लेते। के बाद ना, उसका टारगेट 0.33 नहीं है, उसका टारगेट 292 बन जाता है। ओके। सर उसको 2.0 में डाल के देखिए ना, अगर वर्कआउट हो तो मतलब 0.19 में, मतलब सर ऊपर जाने के बाद में नीचे आएगा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, क्या होगा, यहाँ पहली बात तो हमें इसमें अपने बड़े टाइम फ्रेम भी अलाइन करने होंगे, मतलब माइंड में अच्छा। रखना होगा अपने को सारी चीजें ना। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए भरोसे पे नहीं बैठ सकते ट्रेंड में। पहले तो हमारी सारी ओके। चीजों को अलाइन भी करना होगा, जो मेरा माइंड कहता है। बाकी हम्म। का प्योरली इंट्राडे करना है तो फिर आप कर ही सकते हैं। हाँ। अदरवाइज जैसे सर ने उस दिन बोला था कि अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर सीई में एंटर करेंगे, ठीक है ना। हम्म सीई में एंटर हम्म। आइडली हमारा कब होता सर, 292 हम ब्रेक करते जब होता, करेक्ट है सर। हम्म बट वहां पर बीइंग एज अ एग्रेसिव ट्रेडर, अगर मुझे ट्रेड लेनी थी तो मैंने वो ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट करी, 0.19 पे, जब वो नीचे आया। जस्ट बिकॉज कि मेरा सिंगल एसएल था, क्या, एक कैंडल, 3 मिनट की कोई भी कैंडल 0.19 के नीचे क्लोज करेगी, आई विल एग्जिट। फिर मेरा सेकेंड एंट्री कहाँ बनता, 292 पे बनता। फिर मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। हम्म तो बट मुझे एग्रेसिव एंट्री लेनी थी तो मैंने 0.19 का पकड़ के लिया, ऐसा मैं बोल रही हूँ। हम्म ओके ओके। तो वो 2.0 में डालेंगे तो नहीं चलेगा सर, वो काम वर्कआउट होगा सर। होगा सर ना कर टू देंगे, पॉइंट उसका ऑपरेशन कर देंगे सर, पता है मुझे। हाँ। 2.2 में पोस्टमार्टम ऐसा कीजिए ही सर कुछ उसको। चाहिए जिसमें 40 पॉइंट से रेसिड्यू बनता रहे ना। तो करता हूँ मैं, मतलब मुझे टाइम दे दो थोड़ा। सिर्फ 0.19 का ब्रेक के लिए करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। हम्म ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और कुछ, या क्लोज कर दे सेशन? पर मन तो नहीं कर रहा बंद करने का। अरे, करना तो पड़ेगा ना, मार्केट कल ओपन हो। मार्केट अभी सर एक और एक चीज, सर सुबह अगर गैप अप हो तो कब एग्जिट मारना है सर। एग्जिट अपने को, हाँ वो बताया नहीं क्या मैंने, 1 मिनट। एग्जिट अपने को पर्ल माइंड 4.0 का भी हेल्प ले सकते हैं अपन, बट बताता हूँ मैं। सी, राइट नाउ वी आर एट अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1080। इधर ही हम लोग, 1080 इज दिस। तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस के पास कैपेसिटी में क्या है, प्राइस हैज अ कैपेसिटी टू फॉल फ्रॉम हियर अप टू 750, इधर तक आ सकता है। या इट हैज अ कैपेसिटी टू, कंट्रोल जेड, इट हैज अ कैपेसिटी टू रन टुवर्ड्स दिस। अपना एग्जिट 55 के इधर है। तो यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट्स 400, 480 पॉइंट्स का रिस्क है ऑन स्पॉट। इसका मतलब टोटल रिस्क इज अराउंड इसका हाफ। 240, दो 250 सौ मान लीजिए। पचास 250 पॉइंट्स का रिस्क अपने को हैंडल करना है। 250 पॉइंट मतलब कितना दिखेगा, इंटू 30। 7,500। 75,000। 7,500, 75 नहीं, डराओ मत अब। डरो भी मत। सॉरी, हाँ, 7,500। 7,500, 7,500 रुपया प्लस माइनस होते हुए देखना है, तो भी मार्केट इधर ही जाएगा। तो ओके। हम्म
उतना ही है, यही रिस्क है, बाकी कुछ रिस्क नहीं है। और ये 750 पॉइंट्स का 250 पॉइंट हमने पीछे से कमा तो लिया है, तो वो रिस्क पे डाल सकते हैं। तो पर्ल माइंड एक 4। हम्म। हाँ बोलिए बोलिए सर। पर्ल माइंड 4.0 अपने को दिखा देगा। अभी तो हमने नॉइस वाला एंट्रीज भी निकाल दिया है ना, तो ओके ओके। ये जो है ना, ये अपने को ट्रेड दिखा देगा। ये अभी सी कैरी करने का नहीं दिखाया था, क्योंकि हम डब्बे में अटके। बराबर। नहीं सर, अगर कल मार्केट ओपन होता है और रेड सर सिग्नल देता है तो हमें एग्जिट हो जाना है ना फिर। तो रेड सिग्नल भी देगा, तो रेड सिग्नल समझो यहाँ पे दिया तो 250 पॉइंट्स का रिस्क है। अब अगर इसमें रेड सिग्नल दिया तो निकल जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं है। हम्म। अगर इसमें ग्रीन पे ही ओपन हुआ हम्म। तो अपने को रेड लेट ही मिलेगा, इसका मतलब प्रॉफिट में जाके हम लॉस में आएंगे। मतलब वो कल के पोजीशन से अगर ऊपर ही खुला ना, तो कल के पोजीशन से, मतलब कल जहां पे हमारा पोजीशन था उसके ऊपर ही क्लोजिंग, मतलब छोटा सा पॉजिटिव मिलेगा और फिर री एंट्री का वेट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। हम्म। बट मुझे लगता है कि कल, मतलब जब मंडे मंडे कल ही है ना, कि परसों हम्म। कल, कल कल नहीं, कल। कल कल तो कल दुकान खुलेगा तो ऊपर खुलना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो उसको रैली दिखाना है। एंड दैट रैली शुड बी शार्प रैली, और उसमें सबको ट्रैप करना है, तो भागना शुरू करना है और कहीं पे तो जाके रुकना है। दैट शुड बी 55,000। फिफ्टी फाइव तो थाउजेंड से ऐसा यू तो टर्न नहीं लेना है है। कल रैली दिखाएगा और ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो फिर बढ़िया वाली डाउन में भी रैली दिखा जाएगा। ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो ट्यूसडे 55,000 टच किया तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा फिर। मतलब तो ट्यूसडे फिर 12:40 बजे 55,000 टच करना चाहिए, 12:30 12:40 के बीच में। ऐसा क्यों तो फिर सर? रिवर्सल रहेगा ना सर? हाँ, बारह रिवर्सल चालीस पे ट्रेड लेंगे ना इस बार? रिवर्सल से ले क्योंकि सकते लास्ट हैं ना, टाइम पी ले सकते हैं। 12:40 क्यों? क्योंकि आधा दिन चला जाता है, आधा दिन मार्केट ऊपर भागता है, और वो जीरो टू हीरो वो पकड़ते हैं लोग 12:40। हम्म। मतलब 12:40 को अभी मैं दिखा देता हूँ क्या कर सकते हैं। अगर हुआ 12:40 को तो ही करना, नहीं तो मेरे नाम पे मत पेपर डालना। लीक कर रहे हो? हाँ, देखो, ऐसा ऐसा अगर ट्यूसडे हम 12:40 को इधर पहुंचे हाँ। तो क्या होगा? प्राइस 2100 है ना, ये 2100 का मतलब प्राइस विल हैव अ स्कोप ऑफ 750 एटलीस्ट, समझो। तो सर फिर एक हीरो जीरो तो हम भी कर सकते हैं ना? कौन सा? हाँ, देखो कैसे लालच हमारे सर लालच लचपच है हमें। हाँ, बोलो। 4.0 के बाद हमारे पास सारे ही हीरो जीरो है, जो पकड़ना है पकड़ो। हाँ एग्जैक्टली, 4.2 भी सर मस्त आप ट्रेड बता देगा। 5500 के बाद रीच होने के बाद में सर आप ही मैसेज में बता दीजिएगा ना सर कि कब एग्जिट मारना है करके, क्या हाँ, इधर उधर से 55, छुक होता? फिफ्टी नहीं, फाइव फिफ्टी फाइव को जब थाउजेंड टच कर देगा तो मेरे को भी नहीं पूछना, निकल जाना। क्योंकि फिफ्टी अच्छा फाइव नहीं से मतलब पी मैं री बता एंट्री, दूंगा, पी में नहीं, री मैं एंट्री। बता दूंगा, मैं बता दूंगा, री एंट्री हाँ बता दूंगा। हाँ, सी, हाँ यहाँ ओके से ओके। 750 आ सकता है। सपोज 12:40 को इधर आया, यहाँ से 750 आ सकता है। अब ओके इसमें क्या ओके ओके। होता है, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल 292, ये जो ऑप्शन है ना पी, ये ओके। पी ऑप्शन एट 292 एटीएम वाला, ये आपको 30 रुपए में मिलता है क्या देखने का? 12:40 को 54,700, 30 से 40 के बीच में मिल रहा है क्या? अगर वो मिलता है तो वो जीरो टू हीरो है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इधर तक आ जाएगा, समझो। तो ये इन द मनी आ जाएगा, मतलब जो 30 में मिल रहा है, ये 30 में, जो भी 30 में होगा, अप्रोक्सीमेटली 292 का स्ट्राइक 30 में अगर हो गया तो इतने पॉइंट्स वो देगा। मतलब यहाँ से 1% कितना होता है, इतने तो श्योर देना चाहिए। मतलब कितना पॉइंट है देखो, अनदर 300 पॉइंट, मतलब 30 का ऑप्शन, प्राइस इधर 200 गिरने या के 200? बाद सर वो 270 हो जाएगा। मई का देखना कि जून का सर? ये मई का देखना पड़ेगा। मई का ना? ये जीरो टू हीरो है ना, क्योंकि 30 का स्टॉप लॉस है। ओके ओके। 30 का स्टॉप लॉस, अच्छा हाँ। 30 का क्वांटिटी ले लिया तो उसमें 270 पॉइंट पड़ा है उसमें, अगर वो बारह अच्छा तीस 12:40 के बीच में आया तो सही है 30 सर, पॉइंट का तब ही स्टॉप लॉस सर है। करवा देना सर, अब बस आप सर अगर हाई इफ इट पे हैपेंस लेना टुमारो हमें। इटसेल्फ सर? टुमारो नहीं होगा, टुमारो एक्सपायरी नहीं है ना, हम्म। एक्सपायरी दिन नहीं में नहीं वो ये जीरो। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ।
सर अगर 55,000 अगर कल ही रीच हो गया तो सर? नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है अपने को। उसी टाइम पे उसी चेक पॉइंट सब क्लियर हुए तो ही करना है, नहीं तो नहीं, वर्कआउट कल नहीं एग्जिट करेगा नहीं ना। मारना ना, 55,000 में कल एग्जिट नहीं मारना आपने। कल मारना है ना, 55,000 कभी भी जाएगा, आज जाएगा, कल मतलब कल जाएगा, परसों जाएगा, नरसों जाएगा, कभी भी जाएगा तो कल तो 55,000। मुश्किल है सर, कल तो मुश्किल है, क्योंकि वो जो देगा ना बढ़िया वाला ट्रेड, वो शायद एक्सपायरी में ही देगा। कल रुका के रख सकता है, कल फिर डरा हम्म। सकता है और फिर ऊपर लेके भागेगा, तो होना चाहिए। मुझे हम्म। बेस्ट सर ऐसे मे ही भी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 55,000 पहुंचने से पहले थोड़ा लाइक 292 का गैप अप दे, मतलब नहीं, टू नाइनटी मुझे जो। मुझे क्या लगता है सर, कि ये जो बॉटम है ना, यहाँ से ऐसे पकड़िए, 1080 कर दिया इसने यहाँ से ऐसे, ठीक है, जो मुझे लगता है 1080 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है सर, एक बार प्लॉट कीजिए। 1080, ये वाले बॉटम से? हाँ, ये वाले बॉटम से, ये क्या? ठीक है, यहाँ कहीं आ रहा है ना, फिर हम्म। ये क्या करेगा, काइंड ऑफ 292 का ये ऐसे बनाएगा, ठीक है, फिर हम्म। 292 का 1x करके ऐसे बनाएगा ड्रामे देकर, हो क्योंकि सकता है। एक्सपायरी है ना, हम्म। ठीक है, फिर जब तक इस वाले पे आकर हम अपने टारगेट को भी रीच कर लेंगे। हम्म। जैसे सपोज दैट कल मार्केट खुला, उसने हम्म। क्या किया, 292 तक गया बस, ठीक है, उसके बाद पूरे दिन मार दिया, ठीक हम्म। है, प्रीमियम डिके भी करेगा वो, फिर हम्म। ज्यादा से ज्यादा 1x और दे देगा कि हाँ भाई चलो मैं ब्रेकआउट देने जा रहा हूँ। मतलब हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप से रहेगा। अभी देखो, अगर 55 जाना है तो जैसे किटू जी ने बोला, उसका मैं स्टोरी भी और एक बोलता हूँ, कैसा स्टोरी हो सकता है। मेरे को क्या करना है, पर्पस क्या है, मुझे नीचे आना है, बराबर। तो हम्म। नीचे आने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऊपर जाने का एक्टिंग चाहिए, तो मैं शार्प आऊंगा, राइट। हम्म। ऊपर जाने का एक्टिंग कैसे करते हैं, ये 750 है ना, तो जितने लो बन रहे हैं उससे मैं 750 भागूंगा या बियॉन्ड भागूंगा, और यस। 750 का लो बनाऊंगा। तो मुझे ये लग रहा है यहाँ से ये वाला लो बन रहा है अभी, तो यहाँ से 750 भागूंगा। फिर यस। यहाँ पे मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा, जिससे इधर जब टच करूंगा मैं तो मुझे 750 तोड़ना है। और क्या इसमें स्ट्रेस दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा है, 750 का डब्बा ऊपर जा रहा है, तो जैसे 750 टूटेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। और वो टूटने के लिए अगर मुझे 2 टाइम्स चाहिए, मतलब ये पीजेड चाहिए समझो, अगर ये पीजेड है, यहाँ पे 750 शार्प रैली, 750 शार्प फॉल, तो मेरा आगे का काम भी तमाम हो सकता है, जैसे कि यहाँ से 2x डाउन ऑफ 750 विच विल ब्रिंग मी 2 टाइम, सॉरी 2160 के नीचे भी लाके रख देगा मुझे, ऐसा भी हो सकता है। यस। और इसी के साथ साथ अगर ऐसा होता है, हम्म। यहाँ पर अगर ऐसा होता है ना, तो सर एक रेंज और जो हमने आइडेंटिफाई की है ना 2800 वाला, हम्म। वो आप ना वो भी उसको, कवर हो जाती है, बराबर है। हाँ वहां पर भी 2800 का -1x आ जाएगा इधर। बराबर। इस चीज को भी माइंड में रखना है। ये देखो, ये वैसे ही हुआ है। तो सर ये जो 48 का फाइनल फॉल देगा तब ये शायद अपना जो न्यू रेंज है वो लाइक लाइक डिस्कवर करेगा हमको उसके उसी जर्नी में डिस्कवर होगा। उसी जर्नी में। हम्म। और कल हमने जो डिस्कस किया उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो मार्केट उसका साइन भी देगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी 1080 के ऊपर है, तो जो हमने बोला वो तो होना ही है। हम वन साइड ही बात करते हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं लेंगे ना अपन, तो ट्रेड हम 4.0 से भी ले सकते करेक्ट। हैं। 4.0 में वो सब कुछ कवर्ड है, 4.0 में वो टेंशन नहीं है। उसको भी उसका भी पॉइंट्स, मतलब प्लस माइनस जो भी आएगा वो देख के करना, कुछ फर्क नहीं है उसमें। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल लॉस मेकिंग ट्रेड्स वो प्रॉब्लम था, वो अभी रिड्यूस हो गया है। तो उसमें सिर्फ छोटा लॉस होगा, मतलब अप टू 90 to 100 रुपीज लॉस होगा अगर, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है। मतलब 4.0 में 55,000 के इधर आपको अगर पी मिल रहा है, 55,000 के बाद 4.0 इज गिविंग यू एन एंट्री फॉर पी, दैट एंट्री वुड गिव यू मोर प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है। तो 4.0 में 55,000 के बाद वाला जो पी आ रहा है ना, उसमें फोकस रखना थोड़ा।
वो अपने को पूरा 2800 पॉइंट का रैली भी दे सकता है। सर एक बार आपने जो हमें वो फोटो भेजा था ना, आप वो एक बार मुझे बताओ ना, आपने वो प्लॉटिंग्स कैसे निकाला है सर? कौन सा वाला फोटो? ये नहीं, आप कौन सा इमेज? हाँ, ये वाला एग्जैक्टली ये आपने जो डिकोड किया है, हम्म इसका रेंजेस क्या है? लाइक अगर मुझे सी पहले ही ये, हाँ, हाँ, मार्केट को क्या करना होता है, प्राइस हैज टू फर्स्ट एक्सटेंड बियॉन्ड 2160, दिस इज 2160। तो ओके पहले एक्सटेंड बियॉन्ड 2160 और जब रिटर्न आता है तो लिमिटेड 2160 ही आना है। ओके। ये फर्स्ट चेक पॉइंट है। ऐसा अगर उसने बार बार किया, दिस इज लिमिटेड 2160, एक्सटेंड हम्म लिमिटेड, हम्म एक्सटेंड लिमिटेड, तो एक बार हम्म हुआ, दो बार हुआ, थ्री फोर, जब तक ये इधर नहीं पहुंचता है कितनी भी बार हो सकता है। जितना ओके ज्यादा बार रिटर्न आएगा उतना ज्यादा फास्ट ये भागेगा, ओके। क्योंकि दिस इज वेयर दे आर बिल्डिंग द पोजीशन। व्हेन प्राइस को यहाँ से शार्प यहाँ निकल लेके आते हैं ना, तो इधर जो जो उन्होंने पोजीशंस दे हैव क्रिएटेड, दे हम्म स्क्वेयर ऑफ दोस पोजीशन अगेंस्ट दिस एंड देन दे राइज अगेन। तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें वी गॉट वेरी फर्स्ट साइन, क्या था, नीचे आ रहा था, करेक्ट। बिलो 2160 है। हम्म हाँ, उसके बाद लिमिटेड 2160 ही क्यों गया। तो दिस इज फर्स्ट चेक पॉइंट। सेकेंड तो चेक ये पॉइंट क्या है? 1080 है ना सर, ये जो रिबाउंड लिया है इसने? नहीं, वो टू टाइम्स है। ये इतना 1080 है, ये वन जीरो एट ओके जीरो का ओके टू टाइम्स है, सो दिस इज 2160। ओके ओके। अगेन दिस इज बियॉन्ड 2160, अगेन हाँ। अप टू 2160 आएगा। अभी हम इसका वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हम्म इधर अगर कंफर्म 55,000 पे हम निकल तो जाएंगे, इसके आगे चला गया जाने दो, तो नॉइस जाके हम्म। चेक करना पड़ेगा ऑन वन डे टाइम फ्रेम। डेली। करेक्ट अगर करेक्ट। नॉइस है, सब है, एंड यहाँ से रिवर्स हो गया, तो इसने सेकेंड टाइम कंफर्म किया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, जैसे थर्ड फोर्थ आना शुरू हो जाएगा, 51,000 वुड बी द बेस्ट स्पॉट टू बाय सी, एंड एंड 55,300 वुड बी बेस्ट स्पॉट टू बाय पी। खत्म। ऐसे ही करेक्ट, होगा। ये ब्लू बॉक्स कैसे हमने लाइक प्रिडिक्ट किया? क्योंकि दिस प्रीवियस ब्लू, वाले में, हाँ, दिस सेकंड वन ये 50 to 100 के, हाँ, ये ये ब्लू बॉक्स, हाँ, लाइक हमें कैसे पता ये लगेगा पता कि नहीं है, ये इमेजिनरी है। ओके ये इमेजिनरी ओके डांसिंग है ना, ये एग्जैक्ट नहीं ओके। है। एग्जैक्ट यहाँ हम्म से जब हम आएंगे ना, क्या होगा, हम्म ये जो प्राइस में हो रहा है ना, हम्म क्या हो रहा है पता है वहां पे? गुड क्वेश्चन मंदराज। ये प्राइस जो नीचे आ रही है ना, दिस हम्म। इज 1080 का रेंज, देखना क्या हो रहा है उसके साथ। क्योंकि वन जैसे, आवर में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मुझे जब मैंने हाँ, खुद से ट्राई किया उसको। अभी उस दिन मैंने क्यों बोला, किट्टू जी ने क्यों बोला सर बहुत स्ट्रेस ले रहा है, तो व्हाट आई सॉ, हम्म क्या 1080 का रेंज है क्या इसमें जो नीचे आके डांस करता है? तो आई जस्ट हम्म। नीड टू प्लॉट 1080, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इज देयर एनी कैलकुलेशंस हैपनिंग विद दिस रेंज? तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये दीज ये आर ऑल बॉडी टू बॉडी है, वीक टू वीक है? वीक वन टू जीरो बॉडी, एट जो भी रहेगा, इट इज वीक टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी, इट इज ओवरलैपिंग 1080। ओके। और दिस वाज द लास्ट वाला 1080। इसके बाद प्राइस ने पहली बार इधर, मतलब इधर जाके 1080 को टच करना था, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, 1080 का जो डिस्टेंस है, हम्म ये वाला डिस्टेंस, एक मिनट, जब ये बॉक्स बन रहा है ना, तो दिस लो एंड दिस लो का डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं? ये दिस इज द हाँ, डिस्टेंस। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो प्राइस इज एक्टिंग लाइक कमिंग टू दिस पॉइंट एट द सेम टाइम, दिस हाई एंड नेक्स्ट हाई। तो ये जो हाई था हम्म और ये जो हाई था, मतलब ये लास्ट वाला जो था जिसने 1080 तोड़ा, अब हम्म। हम इतने क्लोज आ गए कि इसमें जो कुछ होगा वो 1080 के अंदर ही होगा। तो अब ये एक मुझे क्या तरह का चाहिए? पीजेड है? हाँ, अब मुझे क्या ओके। चाहिए, मुझे कुछ साइन चाहिए जिसमें इस लो को ब्रेक ना हो ऐसा। हम्म। तो वो मुझे कहाँ पे मिला? यहाँ इन पे दैट, 20 हाँ, में। इन दैट स्ट्रक्चर क्या बता रहा था ये, जो स्क्रिप्टेड है ना, इसमें क्या बता रहा था, इफ यू लुक इनटू दिस, तो उसमें बता रहा है कि ये जो पीजेड बना है,
दिस कैन थ्रो प्राइस अप टू दिस रेंज, इसके करेक्ट। नीचे नहीं जा सकता है। एंड देन ये इधर तक थ्रो हो रहा है, तो ये लो है, ये इक्वल लो या हायर लो हो गया। इसका मतलब करेक्ट। आफ्टर दिस प्राइस हैज टू क्लोज अबव 1080 नाउ, तो जो नेक्स्ट डे हो गया। एंड उसके बाद एक बार 1080 क्लोज हो गया तो 750 नीचे आएगा, वो भी आ गया। ओके। अब 1080 जब तोड़ेगा तो वो 2160 जाने के लिए चला जाएगा। वैसे ओके। जो इधर भी हुआ था देखो, ये एग्जैक्टली exactly इधर भी लो की तरफ आया था, वापस ऊपर गया था, वैसे इधर भी हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला ब्लू बॉक्स है यहाँ पे 1 आवर में, हम्म अगर वो 15 मिनट्स में देखेंगे तो वो 1080 के अंदर ही नॉइस क्रिएट कर रहा है, आप बोल रहे राइट? ये ये वाला, सेकंड हाँ, वाला, ये वाला 1080 के अंदर ही है। ये वाला। करेक्ट। हम्म और ये बाहर गया अभी, ये क्लोजिंग हो गया ना। इफ यू हम्म। मार्क दिस, दिस इज इनसाइड 1080, दिस इज क्लोज्ड, मतलब इसको जाना ही है 55,000, मार्केट खुलने का वेट कर रहा है वो। सर एक बार इसको बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे, गया किस है कि नहीं एट किस जीरो डब्बे को? ये 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 ग्रीन वाले को, हाँ कोई सा भी कर दीजिए, लोअर वाला B2B करना है बस। यस B2B, यस, नाउ वी आर खत्म है इन उसका, सेफ हैंड। सेफ है, वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मीन्स मैंने बोला ब्रेक सी आ कैरी चुका कर है। सकते हैं ना। सर ये वाला, ये 0.99 है क्या? ये वाला एक चेक करिए, ये वाला लास्ट ईयर जहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट। नहीं वो 0.33 है या 19, थ्री 19 में आया था, आई थिंक 33 है। हाँ, मीन्स ऊपर ही खुलने का चांसेस है, हाँ क्योंकि जब इसने ये क्लोज इसने हुआ ना। सर देखिए हाँ 19 वाली कैंडल देखिए, रेड वाली कैंडल देखिए वहीं से, अ- अगर इसको 15 मिनट में स्विच करेंगे ना आप, क्लियर हाँ, दिखेगा ये आपको। देखो, ये 0.19 में ही क्लोज हुआ है। और हाँ जब मार्केट क्लोज हुआ था ना, पोस्ट मार्केट वो सीधा 100 ये नीचे आया था अंदर क्लोज करने के लिए। हाँ 19 को ही। हाँ 19 को ही। ये 54,152 था, हाँ कुछ 54,52 पे क्लोज हुआ है पोस्ट मार्केट। हम्म ये इसने काइंड ऑफ कैसे किया है सर, ये वाला पैच ना, इसने इस तरीके से किया है 0.19, और इसका 1x टाइप का कुछ ऐसे करके, नहीं नहीं ये वाला नहीं है दिस इज सॉरी, 292 है। हाँ ये वाला नहीं है, ये ये टू तो नाइन्टी टू 292, नहीं ये नहीं, ये थोड़ा ट्रेंड तोड़ा ऊपर नहीं है, क्लोज हुआ तो। ये ट्रेंड ही नहीं तोड़ा है, तो ये ऐसे जा सकता है यहाँ से 750। हम्म 750 होता है हम्म। इतना, और 1080 कितना होता है? अरे ये डायरेक्टली 55,000 जाएगा अभी। जाएगा ना, वही वो ये ब्रेक क्या उस दिन 50, उसने नहीं दिया। 54 दिखा रहा है वो, मतलब कल गाड़ी छूटेगी, ट्यूसडे पहुंचनी चाहिए। ट्यूसडे भी पहुंच जाएगी, देखते हैं। क्योंकि ये लो सर जो बना अगर है। इसको परसों मार्केट गिरानी होगी हम्म तो ये कल ही गाड़ी पहुंचा देगा। और परसों ऊपर से ही शुरू करेगा क्या? परसों लाइक 292 का वेट करके, जो आपने बोला ना ब्रेक आने के बाद पी लेना है हाँ हमें, क्यों, वो वहां पे लाके क्योंकि छोड़ देगा। क्योंकि कल जो लोग हाई पे बाई करके जाएंगे हम्म उनको लगेगा कि भाई ये हो गया बॉटम सॉटम जो भी है, चलो हम्म भाई, क्योंकि वीकली की क्लोजिंग है। और अगर जैसे जो लोग इलिएट या वैसे फॉलो करते हैं ना, तो देखो उस पे क्या बना के गया है, हम्म हायर लो, नीचे से हम्म। देखेंगे ये क्या हायर तो लो है? हाँ तो हाई लग लोगों को जाएगी वो लो की। क्या अच्छी। क्या परफेक्ट बोला सर आप। बट इधर स्ट्रेस दिख रहा है ना लोगों को, ये स्ट्रेस क्यों नहीं दिख रहा है? इसमें भी कुछ रहेगा ना इलियट का पैटर्न? नहीं हाँ है? है ना, इसमें सर ऐसा है, है यस एक्चुअली मंगराज को बोल सेकंड रहे वेव थ्री थ्री उसमें आती है, तो ये ऐसे है, बना रहे हो 0 कुछ। 1 2 3 ऐसे करके है। या कुछ लोग मतलब पूरा प्लॉट करना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। हम्म अगर ABC भी हो सकता है, वो आगे से देखना पड़ेगा इसका ABC है क्या है क्या नहीं है। हम्म तो बट जितना मैं मतलब लाइक ऑफिस में भी ये सब का बात होता ही रहता है, तो हम्म मैंने जितना दूसरे रिटेलर से सुना है अपार्ट फ्रॉम टू लाइन्स क्लब, हम्म सबको नहीं पता है कि ये 48,000 गिरने वाला है, और ना ही किसी की
को भी ऐसा लगता है कि बैंक मतलब निफ्टी 19,000 टच करे, उन लोग के लिए वो नंबर ही अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक उन लोग का जो कैलकुलेशन है, लोग बोलते हैं 19,000 निफ्टी कभी आ ही नहीं सकता। मैंने बोला नहीं ठीक है, सर, जिस दिन आधे आएगा से उस ज्यादा दिन ये बोल देखते हैं। के गए, आधे से ज्यादा ये बोल रहे हैं मार्केट बुलिश होगा, कोई नहीं रोक सकता मार्केट को। अच्छा है, सही होना चाहिए। हाँ, मेरी क्योंकि मोटी जब ये सास कुछ स्ट्रेस बोल आया रही, था ना सर, अरे लगाओ पैसा हम्म। लगाओ, पागल हैं सब, बॉटम पे मतलब बॉटम बन चुका है ये वो। हाँ, लगा तो लो आपने मैम भाई। बोला नहीं, हाँ पैसे लगाए हमने, लेकिन उल्टे साइड लगाए, जब आएंगे ना तब खुद सर देखो ऐसा है, जो नहीं माने ना उसको फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए। हर किसी को फ्री की चीज डाइजेस्ट नहीं होती। हम्म, ये सर जो सर आप, ये हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। मैं क्या बोल रहा था कि है ना, कि अगर गैप अपना 1000 पॉइंट ऊपर हो जाता है, और अगर फॉर एन एग्जांपल सर, एक जैसे कि ट्रेड डील हुआ था सर, तो हम्म, फर्स्ट कैंडल में ही है ना सर, सेकंड कैंडल तो है ना एकदम मतलब 35% वो ब्रेक कर दिया था, खत्म अरे कर दिया नहीं था। नहीं 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 सर, कीर्ति सर कुछ मत करना। अगर आपको प्री मार्केट में दिख रहा है ना, हाँ कि हाँ। ये हो गया है मतलब 55,000 पे हो गया है, तो अच्छा। उस समय कितने का कौन सा प्रीमियम, 55,500 की कॉल का जो प्रीमियम होगा ना, उसके हम्म। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे आप डाल के छोड़ देना मार्केट में। नहीं नहीं, अच्छा, जो मेरे नहीं पास जो समझ, कैरी कर रहा हूँ, जो सी कैरी कर हाँ रहे हो वो हाँ क्या? हाँ अच्छा हाँ, सुनिए मेरी अच्छा बात। अच्छा अच्छा। अभी हाँ। कल सपोज दैट मार्केट ओपन हो गया 55,000 पे, ठीक है, अच्छा। हाँ तो शनिवार को जो 55,500 का प्रीमियम हो, मतलब उस समय हुआ होगा, क्योंकि अभी मंडे का तो पता ही नहीं है आपको। हाँ। नहीं समझे? बरोबर बरोबर। तो 55,500 की कॉल का, नहीं 55 क्यों, सर मैं उल्टा बोल रही हूँ क्या, कि 54,500? क्या बोलो बोलो तो चौवन सही पाँच फिर। सौ ना, मैंने तो अपने को कौन सा कैरी, 54,000 का 54,500, कैरी किया हाँ हुआ ना। 54,500 होगा, सॉरी। 54। नहीं, 54,000 ही तो कैरी किया हुआ ना अपन ने। मैं वही बोल नहीं, रही दो हूँ। रेंज था ना, दो दिया था सर नहीं ने, नहीं या फिर सर, 50। अरे मेरे को और अच्छा हाँ। कंफ्यूजन में डाल दिया। अच्छा अच्छा। सर संजय सर, हम्म। सर पूछ रहे हैं कि अगर कल मार्केट 55,000 पे ओपन हो जाता है डायरेक्टली, हम्म। तो मैं एग्जिट कैसे करूंगा उस समय, क्योंकि इम्पल्स तरीके से नीचे लेकर आएगा वो। हम्म। तो उस कंडीशन में हमने 54,000 का ओपन किया, वो किया है ना, हम्म। तो उस समय शनिवार को जो 53,500 की कॉल का प्राइस हुआ होगा, हम्म। आप वो प्राइस डाल के छोड़ देना। स्टॉप लॉस में। नहीं नहीं, प्री मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए। टारगेट। नहीं समझे? हाँ चल, वो भी चल सकते हैं। हेलो? क्या मैडम क्या सर बोल एक रहे हाँ, बार थे? एक्सप्लेन करो, मेरे को ये भी ये देखो, समझा। जैसे कि 53,000 का कॉल का रेट चल रहा है, 53,500 का 1947। हाँ, तो हम्म, बस 1947 डाल के छोड़ देना। 1947 मिल जाएगा आपको फिर। बराबर बोल रहे हैं। है ना? चलो सर ठीक है, पास हो गई मैं। मतलब 54,500 का जो भी प्रीमियम आएगा वहां पे अपना लाइक टारगेट ऐड नहीं करके नहीं छोड़ नहीं, देना। हाँ। मनराज सर, अगर आपने 54,000 खरीदा है, 54,000, तो हाँ। आप 53,500 वाली का देखोगे शनिवार को किस रेंज पे बंद हुआ है वो, क्योंकि मंडे का ओके। रेंज तो मुझे नहीं पता ना किस कॉस्ट पे बंद हुआ है। नहीं, हम्म। 1947 नहीं है, तो 2465 है, सॉरी यार। जो मैंने भी जून है का देख के मतलब, बोला था, जुलाई का, हाँ हाँ। जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, बराबर बराबर। शनिवार को जो उसका कॉस्ट होगा, अगर आपको हम्म। मार्केट हम्म। खुलते ही अपनी बिड डालनी है, हम्म। क्योंकि उस फ्लैक्चुएशन कैंडल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम्म। बट एक्चुअल जो बराबर। प्रीवियस 500 स्ट्राइक का पीछे का जो भी प्राइस हम्म। शनिवार को होगा, वो आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। समझा। नहीं समझे? समझ समझ। गया, लाइक जो प्रीवियस स्ट्राइक प्राइस है उसका ये हाँ जो देखो, भी। हाँ समझा। अभी ये 54,500 है। समझो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुला, तो 53,500 आज कितना है? 2465। तो सर ये आपको 54 लो ना, फिर थोड़ा रिलेटेबल लगेगा क्योंकि वो होल्ड ठीक है, करके बैठे हैं। 54 लिया है 54। समझो। 54,000 सी है। ठीक है, जुलाई। अब हम 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा ऐसा बोल रहे हैं। बराबर। करेक्ट। 1000 पॉइंट मतलब वो 55 तक पहुंच जाएगा। सही है। यस सर। हाँ, तो अभी देखो,
मतलब 54 और 53, सही है ना, 1000 का डिफरेंस है। अब ये 54 अभी हमने आज जिधर लिया मार्केट वहां से 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, तो इसका जो प्राइस है ना 2165, ये वो 500 प्राइस से बढ़ेगा। नहीं, हाँ ये कितने से, 500 से नहीं, ये कितने से बढ़ेगा कैसे निकालते हैं, ये कितने से बढ़ेगा, ये इससे 1000 पॉइंट नीचे क्या है उसका जो प्राइस है ना वो इसका प्राइस हो जाएगा। हाँ, वो आपको 150 का अभी प्रीमियम का देखो पता नहीं, इसमें थोड़ा है। इसमें इसमें कितना दिख रहा है, 666 2806 माइनस 2165। अच्छा 2860, अच्छा बरोबर। हाँ हाँ 2806 हाँ माइनस 2165, मतलब आपको एग्जिट किधर लेना है वो आप पूछ रहे हो, तो 2806 डाल सकते हो, 641 पॉइंट्स मिल सकता है आपको। बरोबर। ओके। हम्म। हाँ, तो एग्जैक्ट वो भी नहीं डालेंगे क्योंकि सैटरडे संडे था ना, तो हो सकता है 5-10 रुपए का प्रीमियम इसमें भी वो लोग गला दें। तो हम्म। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे डाल देना, क्या फर्क दो पड़ रहा हजार है। सात सौ पचास भी डाल दो, चलेगा वो भी हाँ, एग्जिट। 600 पॉइंट 500 पॉइंट भी, लाइक 50 हाँ, 500 पॉइंट इधर है उधर तो क्योंकि बहुत है। हाँ। कई कई बार हाँ, 150 पॉइंट का स्लिपेज दे दिया तो फिर कटने से रह जाएगा वो। बरोबर है। ये फिर देखो हाँ उसके ये, बाद जब डाउन आएगा तो निकाल लेंगे हाँ, ना। तो बस जैसे ही 9-6 आपको दिखे ना, मतलब 1-2 मिनट की देरी हो, तो प्री मार्केट में बिट डाल के छोड़ देना। वही। सर आप प्री मार्केट में देख करके, नहीं तो एक मैसेज डाल देना कि हाँ के एग्जिट करके, तो बस खत्म, एग्जिट कर अरे देंगे सर। सर 1000 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, देखते हैं कल 1000 पॉइंट का हम सोच रहे हैं। नहीं, वैसे लग नहीं रहा सर, ज्यादा से हाँ। ज्यादा 292 या 0.33 का गैप, अब बस इससे हम्म। ज्यादा होगा नहीं। सर आपको क्या लगता है क्या होएगा? मुझे कुछ नहीं लगता है, एक बार ट्रेड में जाने के बाद मुझे पता है मेरा 350 पॉइंट का रिस्क है, बस अभी कल देखेंगे। सर हमने कैरी किया तो मुझे सर लगा ऊपर हाँ। आपने दिस इतना दिस पेपर इज लीक कर दिया है, तो एक दो क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाए तो पता लग जाएगा ना कल क्या होएगा। हाँ सर मैं तो मेरे आपके अभी नहीं मैसेज का दिखा वेट बोले। कर दूंगा सर, मैसेज आपका आएगा जब एग्जिट मार दूंगा सर बस। दिस इज इफ यू हैव कैरीड फॉरवर्ड अ सी, राइट? यस यस। हाँ, अगर नहीं लिया है तो एंड कैन इट इम्पल्सिवली गो अप 1000 पॉइंट्स मार्केट ओपन होते ही? इम्पल्सिव जाने के लिए क्या चाहिए अपने को, इम्पल्सिव होने के लिए नीचे बेस चाहिए, बराबर। हाँ। हाँ तो अभी चलो क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं। बट मोस्टली तो सर सबने बाय किया ही है, लाइक जितना मुझे लगता है। हम्म। नहीं, मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया कोई पोजीशन, बट आई एम आस्किंग इट, ऐसा होता है तो। ओके। देखो अभी मुझे क्या चाहिए, पीछे नीचे से क्वेश्चन क्या था सर। 1000 पॉइंट ऊपर ओपन होगा क्या देख रहे हैं हम लोग, ओके। इम्पल्सिवली ओपन होगा कैसे? इम्पल्सिवली। तो सबसे पहले ओके वो स्ट्रक्चर ही लाना पड़ेगा मुझे, स्क्रिप्टेड वाला। अभी क्या हुआ है, इसका टारगेट इधर खत्म हो रहा है, ये जो डब्बा है ना, इसको नया पीजेड, मतलब ये पीजेड था, इसका 2x गया, माइनस शार्प फॉल 2x 3x आया, तो 4x चला गया, 4x के बाद अगेन 2x नीचे आया, और एक, मतलब अभी हम यहाँ पे सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसको साइडवेज जाना पड़ेगा, ऐसा दिखा रहा है वो। साइडवेज के बाद देयर कैन बी 1750 का फॉल, मतलब इधर भी कैसे आया था, एक, इधर कितना आया, एक कितना आया, 292 आया शायद, ठीक है। फिर इधर जाने के बाद दो 292 आया, और ये पूरा रैली दे दिया इसमें तो। अगर इधर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टली ऐसे ही रैली दिखा रहा है वो। तो ये तो पीजेड पीजेड नहीं, ये 292 दिखा तो रहा है, मतलब पीजेड का काम हो गया है। अगर इसको देखेंगे तो ये पीजेड जैसा ही है बिहेवियर। अब ऊपर का 5 मिनट ब्रेक पे करेगा स्विच तो करके देखिए ना सर, 5 मिनट पे देखिए। अ, अब ये ऊपर ब्रेक करना है, ये क्या, ये पीजेड ही लग रहा है। 2 टाइम्स ऊपर जाने के लिए बेस तो है इसका। सर इसलिए तो वो 1000 नीचे क्लोज किया क्योंकि वो पीजेड के अंदर क्लोज होना था। हम्म। ये देखो इधर तक तो भगा सकते हैं, गैप अप नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन वो भगा तो हो सकते जा हैं। हो सकता है। हम्म। क्योंकि पीजेड
रूल वाइज पॉइंट 292 ब्रेक नहीं किया है, वी आर एट अपर बाउंड्री। इसका ऊपर लेके जाना है तो ऐसा भी टाइम पास कर सकते हैं, इधर 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 फिर तोड़ेंगे, वैसा कुछ कर सकते हैं। और नहीं सर, इसके साथ ही ना ये जो पर्सनल लो मारा है ना, वहां से 1080 भी कंप्लीट हो रहा है इधर ही, इधर ही ना, तो एक डब्बा दे दिया प्रोमिनेंट लो तो। से मार के, प्रोमिनेंट लो हाँ से। ये देखो ना, यस। इधर ही खत्म हो रहा है सब हाँ। कुछ, ये खत्म हो जा रहा है, इधर टारगेट खत्म हो रहा है, तो 3x जाके ये वाला खा भी लेगा वो। मतलब जो किट्टू जी वाला पैटर्न है, इधर से 2x पहुंच जाएगा, इसको साइडवेज ले लो इधर जाके, इसको बोल वो दो। मुझे बोला था कल फोन करके कि हाँ बहन मैं ऐसा ही करूंगा। मैम नहीं जी। आपने लगता है बड़ा क्वांटिटी रखा रहेगा, देखिए अरे उधर तो कहाँ सर, आपको एक लॉट आपको में तो बोल दम के गया था। निकलती है। नहीं, लेकिन इतना बोल सकते हैं, लास्ट टाइम जितना टेंशन में आए थे सब लोग, ये वाले जो रन में कोई इतना टेंशन में नहीं आया, सब उनने बोल रहे सारे जा रहे सारे हैं। पाप नहीं खत्म कर दिए। नहीं, मैं बोलता हूँ टेंशन में कब आते हैं पता है? आज हमने जो सब बोला है वो कल म्यूजिक कब होगा पता है? म्यूजिक जैसा लगेगा, मतलब क्या है, एक बार लॉस एक हिट होने दो 300 400 पॉइंट का, सब लाइन में आ जाएंगे, सब टेंशन में आ जाएंगे। प्रॉफिट जब तक चलता है सब कुछ सही लगता है अपने को। हाँ, सर नहीं इतना प्रॉफिट बड़ा जब तक एक चलता है ट्रस्ट सारे है, गामा सुनाई देता है। हाँ। और जब रेड बटन दिखता है तो उसके बाद मामा लगता है यार सुनाई बंद देता कर दे, सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। ऐसा होना चाहिए, देखो अभी हमने स्क्रिप्ट लिख दिया, कल मार्केट को बताना है ऐसे हो रहा है कि नहीं, है। इधर हो से गया इधर पेपर। जाना चाहिए, और ऐसा कुछ होना चाहिए, दिस शुड बी पीजेड, दिस उसका आधा पीजेड तो आज कर दिया इसने। मेरी बेटी ना सर आपको थैंक यू बोलती है वैसे अभी। ओके, ऐसा क्यों? क्यों बोलती है? बोलती है अभी ना आपके सेशन बहुत कम हो रहे हैं ना, तो हाँ। मुझे आप टाइम दे पा रही हो। अच्छा है, गुड। चलो उससे याद है, हम क्लोज कर देते हैं अभी, सेशन ज्यादा हो गया ये, आज का सेशन 3 घंटे का हो गया वापस, 6:30 7:30 अपनी मदर इन लॉ को यही बोल रही थी कि हम्म। संजय सर डालते हैं 6:30 से 7:30, तो हम्म। मम्मी बोलती मैं किसी दिन ना फोन लेके बात करूंगी कि अरे बाप बेटा रे। तुम्हारा 1 घंटा तो कभी नहीं होता। RSI भी इंटैक्ट है, अच्छा है, मतलब कल का मूव मुझे लग रहा है इट इज गुड। तो सुबह पी देखिए, अरे सॉरी सी देखिएगा तो सी ले सकते हैं, राइट। कल सी दिखेगा तो सी ले सकते हैं, अप टू 55,000। हम्म। 55,000 के इधर सी भी दिखा है तो नहीं लेना है, वो उधर पी का ही देखना है। इसका एक फोटो अंदर लेके, वो रेक्टेंगल जो आपने आज दिखाया है ना ब्लू कलर, वो क्या वो रहेगा क्या भी कल से? रहना चाहिए। अभी वो ब्राउजर कुछ, आपका ब्राउजर कौन सा है, क्रोम ही है क्या कि? हाँ 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 तो मैं हाँ। देखता हूँ, दिखना तो सफारी चाहिए। वालों को स्ट्रगल होगा सर, सफारी वालों को होगा। सर हम्म। मोजरेला पे चल रहा है अच्छे से वो, हाँ मैं तो मोजरेला का, 5% क्रोम के यूज लिए। करती हूँ। नहीं ट्रेडिंग व्यू पे भी सही है वो। हाँ ट्रेडिंग व्यू पे भी सही है, लेकिन क्रोम में नहीं दिख रहा है शायद, अभी मैंने क्रोम खोला ना मेरा ही। नहीं मेरे ही क्रोम में है सर, कैसी बात है। क्रोम में है, दिख रहा है हाँ लाइन, हाँ डब्बा हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। तब हाँ भी तो आप भी किया ना, इट वाज नॉट देयर अर्लियर, राइट? पहले नहीं नहीं था ना। पहले भी था। देखते हाँ हैं, हाँ चलो। मतलब आज किया है सर ने। हाँ, वही। हाँ आज ही है, पहले नहीं था। आज तो मैंने मतलब आज से पहले नहीं किया ना, तो इट विल बी देयर। अंगो कर दो बाबू। ठीक है चलो पायरेट्स, थैंक यू, कल मिलते हैं थैंक यू लाइव वेरी मच मार्केट। सर। बहुत बहुत अच्छा अच्छा मूव है सेशन ये, था। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी फिफ्टी मच सर। फाइव से 55 से 51 का टारगेट है ना? 55 से 51 का जर्नी अगर अपने को मिला, और 51 से 55 300 का मिला, तो सोने पे सुहागा है। वो सारा रिस्क हम 55 300 पे जब डालेंगे, तो इमेजिन करो, आपका सालों का पाप धुल जाएगा। सालों से वाह। जो हम पाप लेके बैठे हैं, सिर्फ अपने को अभी अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट करना है। जो 55 300 पे, उसमें से हम 30% 40% सर वहां पर 50% 2 लॉट डाल रिस्क लेंगे। सकते हैं, वहां पर दो, दो लॉट वही हाँ। मैं बोल रहा हूँ, जितना हम प्रॉफिट, जितना प्रोटेक्ट करोगे प्रॉफिट ये पूरे स्नेकी मूव में, वो जाके हम्म उधर डिप्लॉय करना है। हमारा टारगेट वही है, 55 300। हम्म जिस दिन 55 300 टच करेगा मार्केट, हम्म। तो अपना रैली है। मतलब 51 का रैली अगर मिस हो गया, तो 55 300 का रैली वो क्या रहेगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी है वो, मतलब फॉल के साइड आ रहा है।
जो 24th को आया था ना, वो अगेंस्ट ग्रेविटी था, वो अपसाइड का मूव था, उसमें डर ज्यादा रहता है। फॉल में इतना अच्छा रहना चाहिए वो फॉल 48 को टच करने तक, कि लोगों को लगे कि हाई बनाया है या नया हाई बनाने जा रहा है, और वहां से लोगों को ट्रैप तो करते सर करते 55 में पोर्टफोलियो खाली करने का क्या? वो तो अभी 55 पे नहीं खाली करोगे तो 41 तक जाएगा अभी, क्योंकि अभी वापस एक हाँ चांस तो देगा। करना है ना। करना है, हाँ। वो तो हाँ पहले ही बोला है मैंने, अभी सब जो बनेंगे वो लोअर हाई बनेंगे, और तो सब सर मैं लगेगा बॉटम बन बाजू रहा है। वाले को पकड़ू नहीं, जाके? मैं और लॉन्ग टर्म में जो है वो निकालू ना। निकाल दो। बिकॉज मेरा तो बहुत कम हो गया इसके लिए। हम्म। ठीक है। हाँ संजय सर। हाँ, 55 300 पे निकाल सकते हो, अगर 55 मिस कर दिया तो। हाँ 55 300 पे तो निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। हेलो। ओके हाँ सर। बोलो। हाँ सर, आप बोल रहे फिर मैं बाजू वाले को पकड़ू जाके? बाजू वाले को क्यों, ये वन हाँ। 1 BHK डालने के लिए। उसके तीन चार BHK सारे बेच देता हूँ। ना डाल दो सर, सीरियसली ना वो निकालो ना पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत कम हो रहा है, कम होता है फिर उधर ही है थोड़ा। आपको उधर अच्छा खासा दिखाएगा तब निकाल लो, क्योंकि मुझे तो क्लियर लग रहा है। हाँ और ठीक है। उसका सारा जो कंफर्मेशन है ना, अपने टू हाँ वन सिक्स जीरो के मूव दिखाते जाएगा। अगर 3 4 मूव आ गए 2160 के, तो डेफिनेटली निकालना है अपने को, उसके बाद ही वो उधर तक पहुंच सकता है। हम्म, ठीक है। यस। सर, थैंक यू वेरी मच हम्म। सर। मैं कल फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टू थ्री कितने, फाइव टू फाइव कहाँ तक? 23525 2 3, एक मिनट, पॉइंट बोल दो आप। 525 2 3 5, ये निफ्टी 25। बोल रहे हो? निफ्टी बोल रहे हो ना आप? निफ्टी निफ्टी की बात कर निफ्टी। रहे हाँ, हैं मैं सर। एक मिनट, बैंक एक निफ्टी ट्रैक नहीं करता। ठीक है, आप निफ्टी ट्रैक करते हो ना? कोऑर्डिनेट्स 2 3 5 3 5। हाँ, 3525 ऐसे कुछ नंबर है यार। किधर गया वो? इधर तक। क्या ये 267 है? मैं बता देती हूँ, मेरे पास प्लॉटिंग है। 300 है। 267 तक आ सकता है, यहाँ तक मैं पकड़ता हूँ, मतलब जो आप बोल रहे हो शायद। दिस इज अलाउड, 23573 इज अलाउड। आएगा ना सर, आएगा। क्योंकि ये ना 804 की बाउंड्री पे बैठा है अभी। कैसे कि ओके, ऊपर वाला 804, लेकिन वो ब्रिज करेगा ना ऊपर। ऊपर जाना है उसको, ब्रिज करके 2160 80 के अंदर जाना है उसको। एक मिनट एक मिनट, एक ये और लगा देती लेट हूँ। चल रहा है ये। डिले चल रहा है। सर, 80 मतलब? बैंक निफ्टी का 2160 है ना, वैसे निफ्टी का 802 पॉइंट्स का रेंज है। तो बैंक निफ्टी व्हेन सर, एक्सटेंडेड बिलो 802 इट कैन कम टू 802। तो जैसे मैंने बोला, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डूइंग समथिंग क्रेजी, तो निफ्टी ऐसे जा रहा है ऊपर, सर ऐसे ने ऐसे कितना बोला करके सर इधर प्रेशर? जाएगा और नीचे आएगा निफ्टी। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, सर ने बोला 23 550 कुछ, तो 520 35 फाइव। 35 याद नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन इधर अप्रोक्सीमेटली दिस लाइन, मेरे हिसाब ये से निफ्टी ऐसे जाना चाहिए ऊपर, और यहाँ नहीं। से फॉल देगा, और वो फॉल 802 तोड़ देगा ऊपर से, एक्सटेंड नहीं, डाउन करेगा। सर अगर आया तो तो ये मेरी मेरी जो 593, कैलकुलेशन है सर कि अगर 593 कल से नीचे नहीं आना चाहिए ये। कितना, और 5? 593 से नीचे नहीं आना चाहिए। और वैसे जो मेरी रीडिंग कहती है, ये कल नीचे नहीं आएगा। दैट इज पॉसिबल। मैं ये बोलना चाह रहा था कि नहीं, मैं अगर कल रीजन बता गिर रही जाता हूँ। है हम्म। तो डरने की बात नहीं है, वो अगले दिन ऊपर आ जाएगा वापस। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल 900 रही के हूँ पास। कि सर जो 20 मई का लो बनाया है ना इसने, उसने 267 को ब्रीच किया है। ठीक है। 267 को ब्रीच करने के बाद ये एटलीस्ट कितना आया है हमारा, 240 पॉइंट बैक आया है। 240 बैक आने के बाद ना 120 अप मार के फिर से 90 पॉइंट में आके बंद कर दिया इसने। ये देखो, ये 267 का स्टोरी ऐसा चलेगा।
दिस इज 267। हम्म ये एक्टिंग करते करते ऊपर जाएगा ऐसे 267। सो दिस इज 276 दिखा रहा है बट 267 समझना है इसको। दिस इज 267, दिस इज 267, दिस इज 267, दिस इज 267। तो ऐसे करके उसको ऊपर जाना है। मतलब अभी ये नीचे से करे ऊपर से करे वॉट, अभी तक वो 0.33 ब्रेक नहीं किया तो इमीडिएट वहां से नहीं जाएगा, बट ऐसे करते करते इट विल रीच टू सम पॉइंट। जब बैंक निफ्टी भी इधर पहुंचेगा ना उसी टाइम पे ये निफ्टी भी पहुंचेगा एंड देन इट शुड फॉल, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो बैंक Correct. निफ्टी नीचे से जा रहा है शार्प ऊपर जाके गिरेगा, ये ऐसे ऊपर से ऊपर ही नीचे गिरेगा, ऐसा होना चाहिए। Okay. ठीक है, चलो अभी Thank you, बंद sir. कर देते हैं, नहीं तो मंडे 8-9 बज जाएगा सुबह का अभी। 10 बज गए। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू, गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय। सर फिजिकल बाय। क्लासेस का कुछ सोचा? सोचा है बहुत कुछ है बीच में, और मुझे वो पहले पहले अलगो रेडी करना है, वही ज्यादा मुझे टेंशन दे रहा है, क्योंकि वो फुल ऑटोमेशन पे चला गया तो अपने को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर उसके बाद फ्री टाइम रहेगा ना। तब तक थोड़ा बच्चों की सा टाइम दे छुट्टियां दो, खत्म हो छुट्टियां जाएंगी। खत्म हो जाएंगी वो तो मुझे लग रहा है, बट उसमें कुछ फिर कर मैं नहीं नहीं आ सकते। पाऊंगी। अरे आ पाओगे, उधर आ जाएंगे, फिर वैसा करना पड़ेगा। हाँ, फिर दिल्ली आना पड़ेगा आपको। हाँ, सबको लेके दिल्ली आता हूँ, आप खर्चा उठा दिल्ली रहे हो। दूर नहीं है, नहीं, मेरा चलेगा। घर खाली पड़ा है सर। ये कोई एक दिक्कत ट्रेड नहीं। ले लेंगे ना, अगर 55-300 का ले लेंगे तो दिल्ली आ सकते हैं आराम से सब लोग, उसी में खर्चा करके। नहीं, मेरा घर खाली पड़ा है, टेंशन ना लीजिए आप। ओके, ठीक है, इस पे बात करते हैं। मगर शर्त एक ही रहेगी, सबको खाना मिलके बनाना पड़ेगा। वो सुनाई नहीं दे रहे। मैं कह रही हूँ मैं सबको बुलाने के लिए तैयार हूँ, खाना सबको मिलके बनाना पड़ेगा। वापस मैम से बुलाने के सार्केज्म लिए था। तैयार हो, समझ रहे, सुनना आगे का सुनाई नहीं दे रहा है, बुला सार्केज्म मैम। अच्छा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फिर ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी, ठीक थैंक है, यू ठीक सो है, मच। गुड नाइट सर, गुड नाइट चलो, एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।